Yes, sir. I think we can begin now. The recording has started. Okay, madam, thank you. Good morning to all the participants. See, in the last lecture, we have mainly focused on the mechanism of enzyme action as well as the enzyme kinetics. And we have also tried to solve some of the questions which are asked in various competitive examination. Today, our main focus will be on the enzyme inhibition. We are also going to take few questions from enzyme catalysis as well. We will also discuss the plots related to the enzyme kinetics in brief, as well as we will also discuss some of the important questions which has been asked for the classification of the enzyme. Now, if you recall that when we have discussed about enzyme kinetics, when we have discussed about rectangular hyperbola curve in the last lecture, we have discussed that in rectangular hyperbola curve at a saturating substrate concentration, the reaction follows zero order kinetics. If you recall that particular rectangular hyperbola curve, then this is the rectangular hyperbola curve, which explains the relationship between the substrate concentration and the rate of the reaction, that is velocity. Now, this relationship which has been depicted in this curve, that relation is required to be converted into a linear relationship. The reason is that we have already discussed that the maximum velocity is measured in this particular region where zero order kinetics is followed. Means when the enzyme is completely saturated with the substrate, we measure the maximum velocity at that particular point. But when you perform enzyme assay in the lab, taking different substrate concentration, the value of Vmax will not be exactly same. You may have many different points which are slightly up or down on the graph on the rectangular hyperbola, and that's why you cannot accurately determine that what is the actual value of the Vmax. For example, the plateau starts from here. The zero order kinetic starts from this particular point. So the confusion is that when I want to determine the Vmax, which point I should consider? Should I consider this point, or should I consider this point, or should I consider this point? So actually the determination of Vmax becomes difficult in rectangular hyperbola curve as far as its exact value is concerned. Now if you cannot determine Vmax accurately, then you cannot determine Vmax by 2 accurately. Now we have discussed yesterday that Km is that substrate concentration at which the initial velocity is half of the maximum velocity. So if you cannot determine Vmax accurately, you cannot determine Vmax by 2 accurately, the value of Km also cannot be determined accurately. And we have discussed that Vmax and Km are the most important kinetic parameter to understand the behavior of the enzyme. We have also discussed in the last lecture that Vmax is a conditional constant. It is not an absolute constant. When we say conditional constant, it means that Vmax will change with the change in the total enzyme concentration of the assay system. So if we want to derive a constant which is common, which is constant at all different concentration of the enzyme, then we have to divide Vmax with the total enzyme concentration and we will get the value of Kcat. So Kcat is the absolute constant which will be constant for all the different concentration of the enzyme. And how Kcat is determined, as we have discussed, it is determined by
dividing the Vmax with the total enzyme concentration. So if you cannot accurately determine the total enzyme concentration, you cannot determine kcat also accurately. So in order to address this problem, it is essential that we convert this relationship, this rectangular hyperbola relationship, into a linear relationship. And you all must be knowing that if we take the reciprocal of the equation, then we will be able to get the equation which has been shown over here. 1 upon V is equal to Km upon Vmax into 1 upon S plus 1 upon Vmax. So this equation is a straight line equation which is similar to that of your y is equal to mx plus c equation, where on the y coordinate we can plot the values of 1 upon v. On the x coordinates we can plot the value of 1 upon s. The slope will give us the value of Km upon Vmax. The intercept on y-axis will give the value of 1 upon Vmax, and the intercept on the x-axis will give the value of Km. So we know that this is a linear relationship which can be achieved, and the rectangular hyperbola can be converted into a straight line graph. Now, we know that Lineweaver-Burke plot is very important to determine different kind of inhibition, because there are different diagnostic plots corresponding to different inhibition. You must have studied competitive inhibition, you must have studied non-competitive inhibition, uncompetitive inhibition, and there you identify the particular inhibition by the diagnostic plots corresponding to this Lineweaver-Burke plot or the double reciprocal plot. See, now the question is that since already this particular plot is there, why there is a need for other plots? For example, Eddy Hofstra plot or Wolf plot, hence Wolf plot. Why these kind of plots are required once we have already converted this rectangular hyperbola relationship into a Lineweaver-Burke plot, which is a linear relationship between the reciprocal of the substrate concentration and the reciprocal of the velocity. Now, there are two main reasons behind this. The first reason is that in Lineweaver-Burke plot, we take reciprocals of the velocity and substrate concentration. And that's why in the laboratory, when we perform the enzyme assay, and if there is a small error in the velocity determination, then that error will be amplified, that error will be magnified. Why? Because we are taking the reciprocal. So small error will become large when you are taking the reciprocal of that particular value. So since here we are taking the reciprocal values, if there is any error during performance of the enzyme assay or during the calculation of the velocity or the rate of the reaction, these errors will be amplified, these errors will be magnified. See, when we perform the enzyme assay, we always give more importance to the initial velocity measurements rather than the maximum velocity measurements, because of several reasons. The first reason is that whatever the assay conditions which we have employed, see, when you perform any enzyme assay in the lab, you have to provide some assay conditions. Assay conditions means you have to provide one optimum temperature, you have to provide optimum pH, etc. So when you perform the enzyme assay under the laboratory condition, it may be possible that your enzyme may not be stable under those conditions for longer period of time. Right. Number two, even if you proceed your enzyme assay for the longer period of time, and if product formation takes place, there is a possibility that product feedbackly inhibit your enzyme. So that's why the true velocity measurements may not be possible to calculate. The reason is that either your enzyme is compromising its stability under the assay conditions, number one, and number two,
maybe because of the prolonged incubation or maybe because of the longer incubation time, the concentration of product which is being formed, that may be inhibiting the enzyme of your interest. So that's why when we perform our laboratory investigations with respect to any enzyme, we will restrict ourselves to that region where the first order kinetics is followed, and we try to calculate the initial velocity. Now, what will happen here in the Lineweaver work plot? That when you perform the assay and when you try to plot the values at very high substrate concentration, there is a possibility that there may be a clustering of the points near the y-axis. So the line which we are drawing, that line may be from the different points giving different value of Km, giving different value of Vmax, and giving different value of the slope, that is Km by Vmax. No doubt they are going to give a single value because you can have only one intercept on y-axis. You can have only one intercept on x-axis. You can have only one slope of the straight line. So no doubt they are going to give you a one single value of each of these kinetic parameter. But if you draw the line from the different points which are clustered near the y-axis, then there is a possibility that different students will draw the line from the different points, which will lead to the difference in the intercept on the x-axis, difference in the intercept on the y-axis, as well as the difference in the slope. Right, so student to student, person to person, you may find the error in terms of the different kinetic parameter. The important advantage of the Lineweaver work plot is that yes, definitely we can have one single intercept by which we can identify one single particular value of a kinetic parameter. But due to these drawbacks, we need to modify this relationship in such a manner where this kind of drawbacks of the Lineweaver work plot can be redressed. And that's why these two different plots, for example, AD Hofstra plot or Hans-Wolf plots has been identified, which also determines the linear relationship between the substrate concentration and the velocity. So we will discuss these two plots first, and then we will go to certain model questions from the enzyme inhibition. See, this is the AD Hofstra plot. The equation for the AD Hofstra plot has been shown over here, that V is equal to Vm minus Km into V upon S. So this is also the Y is equal to Mx plus C kind of equation, but here the slope is negative. The slope is negative, and here the plotting is done where x coordinates has V upon S and the y coordinate will have V. So as it has been shown in this particular slide, that we have this kind of relationship, a linear relationship, but with a negative slope, where the slope will determine the value of Km, the intercept on the x-axis will determine the value of Vmax upon Km, and on the intercept on the y-axis will determine the value of Vmax directly. So here you have to remember that what are those intercepts determining the different kinetic parameters in AD Hofstra plot. Right, it is different from what we have discussed in the Lineweaver work plot. If you compare the Lineweaver work plot with the AD Hofstra plot, you can see that in Lineweaver work plot, slope is Km by Vmax. Here slope is minus Km. Here the intercept on the y-axis is Vmax. There it was 1 upon Vmax. And here the value of V by S, the value of Vmax by Km is determined by that of the intercept on the x-axis. So these are the difference which you need to remember as far as the Lineweaver work plot as well as the AD Hofstra plot is concerned. Now the question is that how this equation was derived. See, when we have discussed about the Lineweaver work plot, we have discussed
that reciprocal of equation was taken, and this reciprocal of equation was equal to y is equal to mx plus c, and that's why we could convert the rectangular hyperbola relationship into a linear relationship. So here, how this particular relationship is derived from the equation. Has anybody idea regarding this? That how this equation has been derived? See, we know that how Lineweaver-Burke plot was generated, right? We just took the reciprocal of the equation, and from that reciprocal equation we have drawn the Lineweaver-Burke plot. But how this particular equation corresponding to the Eddy-Hofstra plot was derived? Has anybody idea how it can be done? Yes, any student? Sir, I think taking Michaels-Menten equation and dividing by Vm or Km. Okay, let us see how it has been derived. Let us go through that particular derivation. See, you know that this is equation. V is equal to Vmax into S upon Km plus S. So now, let us rearrange this equation. How we have rearranged this equation? ये जो Km plus S है उसको हम यहाँ पर ले गए V के साथ, तो ये इक्वेशन कुछ इस तरह से हो जाता है V इंटू Km plus S इंटू ब्रैकेट इज इक्वल टू Vmax इंटू S. और जब हम उसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे, when we will multiply Km plus S with V and when we will open the bracket, then we will have V into Km plus V into S is equal to Vmax into S. Okay. Now, if we divide both the sides of the equation with substrate concentration, if we divide both the sides of the equation with the substrate concentration, then we have this kind of situation, that is V into Km upon S plus V into S upon S, that is equal to Vmax into S upon S. So what will happen, that this SS will be cancelled out, this SS will also be cancelled out, and the final equation will be like this, that V into Km upon S plus V is equal to Vmax. So if we derive the equation for the initial velocity V, then it will be something like this, that V is equal to Vmax minus Km into V upon X. V is equal to Vmax minus Km into V upon X, because this entire term we are shifting towards this side. So as a result, जो प्लस था वो माइनस हो जाएगा, and finally this equation will be derived, that is V is equal to Vmax minus Km into V upon S. So this equation is almost similar to your straight line equation, that is y is equal to mx plus c. But here, since the slope is negative, the kind of relationship which we have observed in the previous slide, that kind of relationship is being observed. So here we are going to plot the graph of initial velocity versus V by S, right? So here what we have done, that we have removed the reciprocal as far as the initial velocity is concerned. So the chances of error in the determination of the maximum velocity and Km has reduced. Why? Because we have taken now only one reciprocal in terms of the 1 upon S, that is V into 1 upon S, and 1 upon V in this particular plot has been converted into V. So that's why the Eddy-Hofstra plot may give more reliable data as far as the kinetic parameters are concerned, as far as with compared to the Lineweaver-Burke plot, right?
So this is how the relationship between the initial velocity, maximum velocity, and substrate concentration can be depicted in terms of the AD Hofstra plot. Okay. Another, Sir, yeah, the yes, question. Sir, it is a yes. very basic question, but Hmm. sir, how we do we decide that what should we take on x-axis and y-axis, like versus v or v versus s? So how do we decide that? What is the parameter for that? See, the parameter is that how you are going to conduct your laboratory assay. See, different enzymes, they have different stability under the assay conditions, right? You should have some basic knowledge regarding the enzymes on which you are working. See, when we say that we are performing assay of the enzyme in the lab at a particular pH or at a particular temperature, you should know that under the assay condition, how long that enzyme is going to withstand, right? So you should have some basic knowledge regarding that. If you know that if I will continue to perform the assay with this enzyme for a longer period of time, for the longer incubation period, because my enzyme is taking more time to act upon the substrate, because it has low turnover number, right? Then your line viewer plot may give you the erroneous result, because then there are chances of errors due to the reasons which I have suggested. I have suggested two reasons. If you have listened those two reasons carefully, पहला रीजन मैंने आपको ये बताया था कि अगर आपका एंजाइम ऐसे कंडीशंस में ज्यादा देर तक विथस्टैंड नहीं कर पाता है, तो हो सकता है कि हायर सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन पे आपको एरोनियस रिजल्ट मिले और वो एरर लाइन वीवर वर्क प्लॉट में एम्पलीफाई हो जाएगी, वो मैग्नीफाई हो जाएगी. नंबर वन. नंबर टू, अगर काफी हाई टर्नओवर नंबर वाला एंजाइम है और उसने काफी ज्यादा प्रोडक्ट बना दिया है, तो वो प्रोडक्ट भी आपके एंजाइम को फीडबैकली इनहिबिट कर सकता है, राइट? तो आपको ये देखना पड़ेगा कि आपका जो एंजाइम है वो ऐसे कंडीशंस जो आप प्रोवाइड कर रहे हो उसको ऐसे करने के लिए, उसमें वो कैसे बिहेव करता है, उसकी स्टेबिलिटी क्या है, राइट? अगर वो स्टेबल है, थोड़ा सा कंट्रोल्ड वे में रिएक्शन करता है, देन यू कैन गो फॉर 1/v to 1/s. बट इफ इट इज अ वेरी हाई टर्नओवर नंबर एंजाइम, right, which is not that much stable under the assay conditions, for example, then you can opt for the other plots, because there are chances of error when you are going to perform the line viewer plot. आपको समझ में आ रही है बात? इसीलिए एडवाइजेबल क्या है? एडवाइजेबल ये है that when you perform the enzyme assay, you always focus on the initial velocity measurements under the laboratory conditions. आपको समझ में आ रहा है क्या? हेलो? Yes, sir. Yes. अगर आपने लाइन वीवर वर्क प्लॉट में जो मैंने एक्सप्लेनेशन दिया था कि हमें ये दो प्लॉट्स की जरूरत क्यों पड़ी, वो आपने सुना था ठीक से, राइट? दो रीजंस मैंने दिए थे. पहला रीजन that it is not necessary that under the assay condition your enzyme is going to remain stable for that much period of time. For example, 50 degrees centigrade is your assay condition, right? That minimum, matlab optimum temperature for the enzyme to perform the reaction is 50 degrees centigrade. Now your incubation time is 30 minutes. It is not, sometime it may not be possible that your enzyme may be stable at 50 degrees centigrade for 30 minutes. So if you continue to take the readings up to 30 minutes, there is a possibility that the reading at 30 minutes will not be accurate. There will be the error in that reading because some molecule of enzyme has got inactivated at that temperature. So that error will be magnified in the line viewer work plot because you are taking reciprocal. So if you want to avoid that situation, you go for AD Hofstra plot. Are you getting it? Right. So this is how you are going to decide. जो भी एंजाइम का आपको ऐसे करना है, उस ऐसे कंडीशन में आपका एंजाइम कितना स्टेबल है वो पहले आपको डिटरमाइन कर लेना पड़ेगा, और उस हिसाब से आपको एंजाइम को सबस्ट्रेट के साथ इंक्यूबेट करके वो पर्टिकुलर टाइम पीरियड्स डिसाइड करना पड़ेगा कि मैं कितने टाइम के लिए मेरे एंजाइम को सबस्ट्रेट के साथ इस ऐसे कंडीशन में इंक्यूबेट कर सकता हूं. सिर्फ टेम्परेचर की बात नहीं है, पीएच भी इंपॉर्टेंट है, राइट? तो ये एनालिसिस आपको पहले कर लेना पड़ेगा.
और उसके बाद आपको आपका एंजाइम एसे का जो प्रोटोकॉल है उसको फाइनल करना पड़ेगा, और फिर आप कोई पर्टिकुलर प्लॉट को यूज करके डिपेंडिंग अपॉन दी बिहेवियर ऑफ द एंजाइम अंडर दोस ऐसे कंडीशन आप डिसाइड कर सकते हो कि क्या मैं लाइनवीवर वर्क प्लॉट के लिए जाऊंगा, या मैं एडी हॉफ्स्ट्रा प्लॉट के लिए जाऊंगा, या मैं वुल्फ प्लॉट के लिए जाऊंगा, राइट? तो ये एक इंपॉर्टेंट पैरामीटर है जो आपको देखना पड़ेगा. आई थिंक दिस इज क्लियर नाउ. So can I move ahead? Yes, sir. Okay. See, this is the equation for the LV plot, right? That 1 upon V is equal to Km into V max into 1 upon S plus 1 upon V max. Now, the AD Hofstra plot which we have discussed, it was the modification of the MM equation, but the Wolf plot is the modification of the Lineweaver-Burke plot. So here we will take Lineweaver-Burke plot equation or the double reciprocal plot equation as a base, and we will try to derive the relationship between the initial velocity, maximum velocity, and substrate concentration, and we will see that how they are related through the Michaelis-Menten constant Km. So here our base will be the LB plot, or our base will be the double reciprocal plot. So now what we will do, that we will multiply both the sides of this double reciprocal plot with the substrate concentration, right? So if we multiply both the sides with the substrate concentration, then the equation will be like this, that S upon V is equal to Km into S upon Vmax into S plus S upon Vmax. So if this is the situation, then the final equation will be, because this S will be cancelled out, this S and this S will be cancelled out, and that's why we have this kind of equation, S upon V is equal to Km upon Vmax plus 1 upon Vmax into S. So here what we are going to plot, we are going to plot substrate upon velocity versus substrate concentration, substrate versus velocity, substrate by velocity versus substrate concentration, and this is going to be your Wolf plot. This is going to be your Wolf plot. So this is the equation for the Hans-Wolf plot. So here you can see that on y-axis we have S upon V, and on the x-axis we have substrate concentration. So here the relationship is like this. Here we have the positive slope, so the slope will give us the value of 1 upon Km, while the intercept on the y-axis will give us the value of Km upon Vmax, and the intercept on the x-axis, when we extrapolate this on the intercept on the x-axis, it is going to give us the value of Km. So this you have to remember, that in different kind of plot, which particular kinetic parameter is determined at which particular place. Okay, now here also you can see that reciprocal of 1 upon V is there here, and reciprocal of and here there is a substrate concentration, right? So no doubt here also we have one single point where we can accurately determine the value of Km upon Vmax, value of Km, and from the slope we can calculate the value of 1 upon Vmax. But here you can see that whether it is a Hans-Wolf plot or whether it is a AD Hofstra plot, out of the two parameter, one parameter is in the original form. It is not in the reciprocal form. So definitely there is going to be a chances of less error, and they will give us more accurate values than that of the Lineweaver-Burke plot, because here you can see that either the substrate concentration is in its original form, it is not in the reciprocal terms, and in case of the
if you talk about the Hofstra plot, in Hofstra plot, the velocity is in the form of the original form, that is not in the reciprocal form. So see, it is not possible that both the terminologies will be in the original form, because then it is a rectangular hyperbola curve and there will be no linear relationship. So in order to determine the linear relationship, we can use any of this plot, whether it is a Lineweaver plot, whether it is a Hofstra plot, or whether it is a Hans-Wolf plot. So main objective of deriving this relationship is that we come up with one single point, one single intercept on the graph, where one single value will be obtained for each of these kinetic parameter, so that it can be accurately determined, which is very difficult to find out in case of the rectangular hyperbola curve. Okay, now the questions will arise that when we are talking about the three different plots, where the in Hans-Wolf plot and in case of the Hofstra plot, why we are then not considering these plots for the enzyme inhibition studies? See, whatever the diagnostic plots in the enzyme inhibition studies are there, these diagnostic plots are Lineweaver plot. आपने पढ़ा होगा, कॉम्पिटिटिव इनिबिशन पढ़ा होगा आपने, नॉन कॉम्पिटिटिव इनिबिशन पढ़ा होगा, अनकॉम्पिटिटिव इनिबिशन पढ़ा होगा. ये सब में जो डायग्नोस्टिक प्लॉट है वो ज्यादातर लाइनवीवर प्लॉट है. उनके कैरेक्टरिस्टिक पैटर्न को हम देख करके बताते हैं कि कोई एंजाइम है वो कॉम्पिटिटिव इनिबिशन से इनिबिट हो रहा है, या नॉन कॉम्पिटिटिव इनिबिशन से इनिबिट हो रहा है, या अनकॉम्पिटिटिव इनिबिशन से इनिबिट हो रहा है. राइट, इसके पीछे का रीजन ये है कि यहाँ पे जब भी हम एंजाइम ऐसे करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ इनिबिटर, हम हमारे इन्वेस्टिगेशंस उन रीजियंस में रिस्ट्रिक्ट करके रखते हैं जिस रीजियन में लीनियरिटी फॉलो होती है. Right, it means when we increase the substrate concentration, the rate of the reaction also increases with the same magnitude. That is when the first order kinetics is being followed. Right, क्योंकि आपको पता है कि कुछ ऐसे इनिबिशन हैं जिसमें अगर सबस्ट्रेट का कॉन्सेंट्रेशन इनिबिटर से कहीं ज्यादा हो, वो इनिबिटर के मॉलिक्यूल को आउटनंबर कर देता है. राइट, फॉर एग्जांपल कॉम्पिटिटिव इनिबिशन की अगर अपन बात करें, तो कॉम्पिटिटिव इनिबिशन में हायर सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन पे जो इनिबिटर है उसको सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल आउटनंबर कर देता है. तो उसका मतलब अगर आपको किसी भी मॉलिक्यूल का इनिबिशन पैटर्न स्टडी करना हो, तो सबस्ट्रेट रेंज जो है वो आपको रिस्ट्रिक्ट रखनी पड़ेगी. और वो सबस्ट्रेट रेंज अगर आप रिस्ट्रिक्ट करके रख देते हो, और जब अलग अलग इनिबिटर के कॉन्सेंट्रेशन को आप स्टडी करते हो एंजाइम के ऊपर, तो उतनी मुश्किल नहीं आती जब सैचुरेटिंग सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन के वक्त आती है, बिकॉज यू आर रिस्ट्रिक्टिंग योर इन्वेस्टिगेशन टू दैट रीजन वेयर द फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स इज फॉलोड एज फार एज द एंजाइम इनिबिशन काइनेटिक्स आर कंसर्न. And when we compare these three plots, even if we are restricting our investigations to the region where the first order kinetics is being followed, then we can definitely identify those characteristic plots which are corresponding to different inhibition. And in that circumstances, the Lineweaver plot gives clear-cut indication, clear-cut difference between all different type of inhibitions which we are aware of, that is competitive, non-competitive and uncompetitive inhibition. So they are so clear and so distinguishable that just by looking at that particular plot we can say that enzyme is inhibited by which particular kind of inhibitor. Okay, now so you know that enzyme inhibition and regulation, which we are going to discuss, we know that enzyme inhibition by and large can be divided into two different categories, reversible inhibition as well as irreversible inhibition. See, reversible inhibition means that here your inhibitor is not tightly associated with the enzyme. If you perform dialysis or if you perform dilution, you will be easily able to
remove the inhibition. And they are divided into three different categories depending upon how they inhibits the enzyme: competitive, non-competitive, and uncompetitive. And the irreversible inhibition, where the inhibitor is tightly associated with the enzyme. Even if you perform the dialysis or even if you perform the dilution, you will not be able to reverse the inhibition. But both the inhibition has some significance as far as the mechanism of enzyme action is concerned. See, we generally look at the inhibitor as a molecule which reduce the rate of the reaction, which reduce the activity of the enzyme, right? But they have certain important significance as far as the applications of the inhibitors are concerned. One of the major important application of such inhibition is that by the inhibition we will be able to delineate various metabolic pathways. See, we are by using inhibitors, different enzyme inhibitors, we will be able to determine that in a particular metabolic pathway where the particular intermediate is present by blocking the different enzyme at a different time, converting one particular precursor into a different intermediate. तो इनिबिशन से हम ये भी पता लगा सकते हैं कि कोई एक पर्टिकुलर पाथवे है, उस पाथवे में इंटरमीडिएट का सीक्वेंस क्या है, क्योंकि सभी रिएक्शन अलग अलग एंजाइम कैटालाइज करता है. तो जिस एंजाइम का इनिबिटर हम डालेंगे उसके पहले वाला जो इंटरमीडिएट होगा वो एक्यूमुलेट होगा. उस इंटरमीडिएट को हम कैरेक्टराइज कर सकते हैं डिफरेंट टेक्निक से, स्पेक्ट्रोफोटोमेट्रिक टेक्निक से या क्रोमेटोग्राफिक टेक्निक से, और फिर हम ये पता लगा सकते हैं कि ये इंटरमीडिएट था वो कौन सा था. तो एंजाइम इनिबिशन से हम मेटाबॉलिक पाथवे को डिलिनिएट करने का काम कर सकते हैं. उतना ही नहीं, कितने सारे ऐसे ड्रग्स हैं विच आर रिवर्सिबल इनिबिटर्स. फॉर एग्जांपल, इफ वी टॉक अबाउट पेनिसिलिन एंटीबायोटिक, penicillin antibiotic is a competitive inhibitor for transpeptidase enzyme, which is very, very important in the peptidoglycan biosynthesis, right? Allopurinol, which is the drug for gout, it is also a competitive inhibitor. Sulfa drugs, they are also the competitive inhibitor which will inhibit the enzyme methyl transferase, which is responsible to convert cytosine into thymine, right? तो कई सारे ऐसे ड्रग्स हैं जो कॉम्पिटिटिव इनिबिटर का काम करते हैं. इरिवर्सिबल इनिबिशन का जहां तक सवाल है, इरिवर्सिबल इनिबिशन का मेन जो एप्लीकेशन है वो एक्टिव साइट मैपिंग में है. सी, एंजाइम का जो भी कैटालिसिस है या एंजाइम का जो भी सबस्ट्रेट के साथ बाइंडिंग है वो उनके एक्टिव साइट के ऊपर जो बाइंडिंग रेसिड्यूज हैं या जो कैटालिटिक रेसिड्यूज है उसकी वजह से होता है. अब कुछ जो इनिबिटर्स हैं, इरिवर्सिबल इनिबिटर्स, वो इन रेसिड्यूज के लिए स्पेसिफिक होते हैं. जैसे अगर मैं पॉलीमिथाइल सल्फोनिल फ्लोराइड नाम का एक इनिबिटर है, PMSF, या डाई आइसोप्रोपाइल फ्लोरोफॉस्फेट, DIPF नाम का एक इनिबिटर, ये ऐसा इनिबिटर है जो एंजाइम पे वहां जाकर के बाइंड करेगा जहां पे एक्टिव साइट पे सीरीन अमाइनो एसिड होगा, राइट? इट विल बाइंड टू द हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऑफ द सीरीन एक्सक्लूसिवली, which is there at the active site of the enzyme. So if you have one enzyme X and if you want to know that whether there is a serine present on the active site of the enzyme or not, you treat your enzyme with the PMSF or you treat your enzyme with the DIPF. And if the activity of this enzyme is inhibited, you can say that yes, the enzyme has a serine on its active site as an active site residue. Or in other words, if the activity of the enzyme is inhibited by PMSF or if it is inhibited by DIPF, we can say that yes, this enzyme is a enzyme having serine as a active site residue. Similarly, if it is inhibited by iodoacetamide or if it is inhibited by iodoacetate, then we can say that
the active site residue is cysteine, that is SH group containing amino acid, sulfhydryl group containing amino acid. So these irreversible inhibitors, they are generally used for the active site mapping. If you want to map that how many catalytic residues or how many binding residues are there on the active site of the enzyme, then this can be done by the irreversible inhibitor. So it has its own importance. Irreversible inhibition is used for the active site mapping. What you can do, you can mix your enzyme with the irreversible inhibitor. You give the treatment of that enzyme with the proteolytic enzyme, and after that you can perform the electrophoresis. So you can collect the fragments, you can sequence the fragment, and you can identify that which amino acids are there on the active site after treating them with a particular kind of irreversible inhibition. तो इनिबिशन की जब हम बात करते हैं तो सिर्फ एंजाइम रेगुलेशन की यहाँ बात नहीं आती है, रेट ऑफ द एंजाइम कैटालाइज रिएक्शन को रिड्यूस करने की यहाँ बात नहीं आती है. इसके कुछ रिसर्च पॉइंट ऑफ व्यू से, कुछ एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी सिग्निफिकेंस हैं, जो थोड़े बहुत एग्जांपल जो अभी हमने डिस्कस किए. राइट नाउ, as far as the competitive examination are concerned, many questions are asked from the enzyme inhibition, and sometime they will give the plot or they will give the relationship with in the presence of more than one inhibitor, and they will ask you that which inhibitor is strongly inhibiting this particular enzyme, right? So we are going to discuss all these questions in the subsequent slides, but let us start with this particular model question. The question states that penicillin acts as a suicidal substrate, and which one of the following step of catalysis does a suicidal inhibitor effect? Suicidal inhibitor means what? पहले तो ये हमें जानना पड़ेगा. Suicidal substrate मतलब unless until it will bind to the active site of the enzyme, it is not an inhibitor. When it will bind to the active site, when enzyme will act upon it, that substrate will get converted into an inhibitor. देखिए, जब तक वो पर्टिकुलर मॉलिक्यूल एंजाइम से बाइंड नहीं हुआ है, तब तक वो एंजाइम का कोई बोनाफाइड इनहिबिटर है नहीं. एंजाइम खुद उसको इनहिबिटर बनाता है. कैसे? कि जैसे ही वो पर्टिकुलर सबस्ट्रेट एंजाइम की एक्टिव साइट पे बाइंड करता है, एंजाइम उसके ऊपर कैटालिसिस करता है, और कैटालिसिस करने के बाद कुछ इस तरीके से रिएक्शन होता है कि वो जो पर्टिकुलर सबस्ट्रेट है वो एंजाइम की एक्टिव साइट से रिमूव ही नहीं हो पाता. राइट, और जब वो रिमूव नहीं हो पाएगा, सबस्ट्रेट जो है वो एक्टिव साइट के ऊपर बाइंड नहीं कर पाएगा, और उसकी वजह से एंजाइम कैटालाइज रिएक्शन जो है वो इनहिबिट हो जाएगा. तो इस टाइप के जो इनहिबिटर्स होते हैं या इस टाइप के जो सबस्ट्रेट्स होते हैं उन्हें सुसाइडल सबस्ट्रेट कहा जाता है. तो यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछा गया है जो CSIR नेट का ही क्वेश्चन है, दैट द पेनिसिलिन एक्ट एज अ सुसाइडल सबस्ट्रेट, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेप ऑफ कैटालिसिस डज अ सुसाइडल इनहिबिटर अफेक्ट. तो रिएक्शन है E plus S2ES, rate constant is K1, then ES will get converted into EP, and then EP to E plus P. So here the rate constant is K2, here the rate constant is K3. Right, here the rate constant ES to E plus S is K minus 1. Now what we have discussed about the suicidal inhibitors, that when they will bind to the active site of the enzyme, they are not yet a inhibitor, but once the enzyme will act upon this substrate, and when they will get converted into the product, this product now is an inhibitor. It is not getting released from the enzyme, it is remaining covalently attached to the enzyme. So this reaction is not happening. EP to E plus P, this reaction is not happening if your substrate is a suicidal substrate, and if it has converted into the product which is nothing but a suicidal inhibitor. So what in the presence of penicillin will happen, that the EP will form, but this EP will
not get converted into E plus P. Matlab from the active site, the product will not be released. So enzyme will not set free. And if this enzyme will not set free, it cannot again go and bind with the substrate and again perform the same reaction. Right? So since the enzyme is not getting free, it is not available to the substrate. If it is not available to the substrate, no ES complex formation, and no ES complex formation, no product formation. So this kind of inhibition is known as inhibition by the suicidal substrate, or it is known as inhibition by the suicidal inhibitor. So if you look at the rate constant for this particular reaction, that is EP to E plus P, then it is nothing but a K3, that is the rate constant which is responsible for the removal of the product from the EP complex. So that's why here the correct answer is K3, and that is C, because breakdown of EP into E plus P will not possible if your substrate is a suicidal substrate. A substrate which is no longer an inhibitor unless until it is acted upon by the catalytic site of the enzyme. So penicillin is one such inhibitor, and that's why this K3 will be affected. So have you understood this explanation? Yes, sir. Yeah. Yes, Okay. sir. Okay. Sir, Yes. penicillin is suicidal substrate for transpeptidase, right? Yes. Transpeptidase. Okay, thank you, sir. See, these are some of the important characteristics of competitive, non-competitive, and uncompetitive inhibitors. So sometime the questions from these characteristics related to the different inhibition is also asked in the competitive examination. Now, if we talk about the competitive inhibitor, you are aware that the inhibitor is the structural analog of the substrate, and that's why it competes with the substrate in order to bind with the enzyme. Now, since in competitive inhibitor, your substrate and the inhibitor will compete in order to bind with the enzyme, there are only two possibilities. That either there is a formation of the EI complex, or there is a formation of the ES complex. If the active site of the enzyme is occupied by the substrate, then there is no scope for the inhibitor to bind with the enzyme. And if the inhibitor will occupy the size on the enzyme molecule, then there is no scope of substrate to bind with the enzyme. So in competitive inhibitor, always inhibitor will bind to the free enzyme. See, when we perform the enzyme assay in the presence of the competitive inhibitor, ये जो सबस्ट्रेट और इनहिबिटर के बीच में जो कंपटीशन होगी, इस कंपटीशन में कौन जीतेगा वो डिपेंड करता है कि व्हाट इज द रिलेटिव कंसंट्रेशन ऑफ द सबस्ट्रेट एंड इनहिबिटर इन द एसे सिस्टम. व्हाट इज द रिलेटिव कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट एंड इनहिबिटर इन द एसे सिस्टम. जब भी हम इनहिबिशन स्टडीज करते हैं तो हम कैसे करते हैं? वी टेक द फिक्स कंसंट्रेशन ऑफ एंजाइम, we take the fixed concentration of inhibitor, and we take increasing concentration of substrate. इस तरीके से हम एंजाइम ऐसे परफॉर्म करते हैं जब हमें इनहिबिशन स्टडीज कैरिड आउट करना हो तब. तो उस वक्त क्या होगा कि कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन में जब आपका सबस्ट्रेट का कॉन्सेंट्रेशन इनहिबिटर से कम होगा, तब तक इनहिबिटर फ्री एंजाइम के साथ बाइंड होकर के EI कॉम्प्लेक्स बनाता रहेगा. Right. So here we need to remember that in competitive inhibitor, substrate and enzyme will never be encountered simultaneously on the active site of the enzyme. Either or वाला मामला है. Either substrate will bind or the inhibitor will bind, because they are competing for the same site to bind on the enzyme, and that is the active site. Right. तो ये म्यूजिकल चेयर जैसे आप खेलते हो ना, उस टाइप का है कि म्यूजिकल चेयर में कोई एक आदमी बैठेगा और बाकी के जो है वो रह जाएंगे. कौन बैठेगा वो डिपेंड करता है
जहाँ तक कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन का सवाल है, कॉम्पिटिटिव इनिबिशन का सवाल है कि what is the relative concentration of substrate and inhibitor. When the concentration of inhibitor is higher than the substrate, at that point of time EI will bind, inhibitor will bind and it will form the EI complex. जैसे जैसे आप substrate concentration बढ़ाते जाओगे, when substrate concentration will increase than that of the inhibitor, for example at saturating substrate concentration for example, तो उस वक्त inhibitor molecule outnumber हो जाएंगे and substrate will bind with the enzyme. So now what will happen that initially when the substrate concentration is low, the avidity of the enzyme towards the substrate will reduce because the inhibitor is hitting the active site of the enzyme, and that's why there is an increase in the Km. But if you want to measure the Vmax at a saturating substrate concentration where the substrate will outnumber the inhibitor molecules, there is not going to be any change in the value of the Vmax. So this is one of the important kinetic feature of the competitive inhibitor where there is going to be an increase in the Km and there is no change in the Vmax. So how it can be determined? It can be determined from your LB plot where you have same intersection point on the y-axis and you have two different intersection points on the x-axis, and on that basis you can determine that whether this inhibition is competitive or non-competitive. In non-competitive inhibition, there are two possibilities, that your inhibitor will either bind to the free enzyme or it will bind to the ES complex. Now the reason is that in non-competitive inhibitor there are two separate sites, one active site for the substrate and second site which is away from the active site or the away from the substrate binding site for the inhibitor. So since here there is a separate binding site for the substrate and inhibitor, there is no competition between the substrate and inhibitor in order to bind with the active site of the enzyme. So here substrate will bind independently to the enzyme and inhibitor will also bind independently to the enzyme. Another important thing is that here the binding of inhibitor and substrate to the enzyme does not depend upon their relative concentrations. राइट, सबस्ट्रेट और इनहिबिटर के कॉन्सेंट्रेशन में कितना डिफरेंस है वो यहाँ पे डिटरमाइन नहीं करेगा कि एंजाइम का इनहिबिशन कितने लेवल तक का होगा, क्योंकि दोनों अलग अलग साइट पे बाइंड हो रहे हैं. सबस्ट्रेट के लिए अलग साइट है, इनहिबिटर के लिए अलग साइट है. लेकिन जब इनहिबिटर अपनी साइट पे बाइंड होगा तो उसकी वजह से जो कन्फर्मेशन चेंज होगा एंजाइम में, वो जो एंजाइम है उसकी कैटालिटिक जो एफिशिएंसी है या उसकी जो कैटालिसिस की जो क्षमता है उसको कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचाएगा. राइट. सो यहाँ पे क्योंकि सबस्ट्रेट और इनहिबिटर का बाइंडिंग एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है, यहाँ पे केएम अफेक्ट नहीं होगा बिकॉज दे आर नॉट कॉम्पिटिंग विथ ईच अदर in order to bind with the same active site. So here the inhibition is independent of the substrate concentration. Here the substrate concentration अगर आप higher कर दोगे तो inhibition नहीं होगा, ऐसा नहीं है. It will not outnumber the inhibition. Why? Because the inhibitor has altogether a separate binding site. So that's why it will lead to the decrease in the Vmax, and on the Lineweaver-Burke plot it can be observed where there is the same intersection on the x-axis and two different intersection on the y-axis. देखिए जितने भी फीडबैक इनहिबिशन होते हैं प्रोडक्ट के थ्रू, या आपने ये एलोस्टेरिक एंजाइम्स के बारे में पढ़ा होगा जिसमें कुछ रेगुलेटरी मॉलिक्यूल्स होते हैं या कुछ मॉड्यूलेटर होते हैं जो रेगुलेटरी सब यूनिट पे बाइंड कर जाते हैं और फिर वहाँ से जो कन्फर्मेशन चेंजेस कैटालिटिक साइट को कम्युनिकेट होते हैं in the form of the conformation change, ये substrate binding की जो affinity है उसको determine करते हैं. राइट. तो सिमिलरली इसी टाइप का इनहिबिशन यहाँ पे नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन में हमको देखने को मिलेगा. तो जितने भी ये फीडबैक इनहिबिशन अपन देखते हैं कि प्रोडक्ट जो है वो बाइंड हुआ और उसने एंजाइम की जो एफिनिटी थी टुवर्ड्स द सबस्ट्रेट या उसका जो रेट ऑफ द रिएक्शन था उसको रिड्यूस किया,
वो सभी नॉन कॉम्पिटिटिव इनिबिशन के एग्जांपल्स हैं, राइट। तो यहाँ पे ये तीन इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स, ये तीन इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हमें याद रखनी पड़ेगी, और ये है कि नॉन कॉम्पिटिटिव इनिबिशन में योर इनिबिटर कैन आइदर बाइंड टू दी फ्री एंजाइम और इट कैन बाइंड टू दी ES कॉम्प्लेक्स, राइट। तो कौन पहले बाइंड होगा या कौन बाद में बाइंड होगा उससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि यहाँ पे सबस्ट्रेट और इनिबिटर दोनों की बाइंडिंग साइट्स अलग अलग हैं। जहां तक अनकॉम्पिटिटिव इनिबिशन का सवाल है, सी अनकॉम्पिटिटिव इनिबिशन में भी इनिबिटर और सबस्ट्रेट दोनों की जो बाइंडिंग साइट्स हैं वो अलग अलग हैं। लेकिन प्रॉब्लम क्या है यहाँ पे कि सबस्ट्रेट की जो बाइंडिंग साइट है, एक्टिव साइट, इनिबिटर की बाइंडिंग साइट उसके बाजू में ही है। मतलब इनिबिटर बाइंडिंग साइट और सबस्ट्रेट बाइंडिंग साइट एक दूसरे के नजदीक हैं। अब यहाँ पे होता क्या है कि जब भी इनिबिटर ऐसे सिस्टम में होगा और वो अगर अनकॉम्पिटिटिव इनिबिटर है तो इट विल एक्सक्लूसिवली बाइंड टू द ES कॉम्प्लेक्स। उसके पीछे रीजन है, देखिए रीजन उसका ये है कि इनिबिटर बाइंडिंग साइट इन द एब्सेंस ऑफ सबस्ट्रेट वो कवर्ड रहती है, मतलब इट इज नॉट एक्सपोज्ड टू द इनिबिटर। होगा क्या कि जब सबस्ट्रेट एंजाइम को बाइंड करेगा तो उसकी वजह से एंजाइम में कुछ कन्फर्मेशन चेंज होगा, और ये कन्फर्मेशन चेंज इनिबिटर साइट को एक्सपोज करेगा, तब जा करके इनिबिटर जो है वो एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स को बाइंड हो पाएगा। तो इन अनकॉम्पिटिटिव इनिबिशन यू विल ऑलवेज हैव ESI complex. It indicates that the binding of substrate to the enzyme is prerequisite before the binding of the inhibitor to the enzyme. और ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि सबस्ट्रेट और इनिबिटर दोनों की बाइंडिंग साइट एक दूसरे से नजदीक है। तो जब तक एंजाइम के साथ सबस्ट्रेट बाइंड नहीं हो जाएगा तब तक वो इनिबिटर वाली साइट ओपन नहीं होगी ड्यू टू दी कन्फर्मेशन चेंज, वो एसेसिबल नहीं होगी इनिबिटर के लिए। और जब सबस्ट्रेट बाइंडिंग से, कन्फर्मेशन चेंज से जैसे ही वो साइट एसेसिबल हो जाएगी, इनिबिटर जो है वो वहां पर बाइंड हो जाएगा और वो एक कॉम्प्लेक्स बनाएगा जिसको हम ESI कॉम्प्लेक्स कहते हैं। सी इन नॉन कॉम्पिटिटिव इनिबिशन यू हैव बोथ द पॉसिबिलिटीज, either you have EIS complex formation or you have ESI complex formation. But in uncompetitive inhibition, you will always have ESI complex formation. The reason is that in ESI complex formation, the binding of substrate is prerequisite before the binding of the inhibitor. Right? अब होगा क्या कि देखिए जब inhibitor enzyme से bind होगा तो वहां पे भी कुछ कन्फर्मेशन चेंज होंगे, और ये कन्फर्मेशन चेंज ऐसे होंगे जो सबस्ट्रेट बाइंडिंग साइट को कम्युनिकेट किए जाएंगे। और जब सबस्ट्रेट बाइंडिंग साइट पे ये कन्फर्मेशन चेंज कम्युनिकेट होंगे तो ऐसा होगा जिसमें सबस्ट्रेट की एंजाइम के लिए एफिनिटी तो बढ़ेगी, मतलब Km तो डिक्रीज होगा, लेकिन प्रोडक्ट बनाने की जो उसकी क्षमता है, उसकी जो कैटालिटिक क्षमता है उसमें कमी आ जाएगी, और उसकी वजह से Vmax जो है वो डिक्रीज होगा और Km जो है वो भी डिक्रीज होगा। तो इसको अगर हम डायग्नोस्टिक प्लॉट के फॉर्म में अगर देखेंगे तो इन द प्रेजेंस एंड इन द एब्सेंस ऑफ इनिबिटर हमें दो पैरेलल लाइंस मिलेंगी which is having two intercepts on the x-axis as well as two intercepts on the y-axis, right? तो ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं कॉम्पिटिटिव, नॉन कॉम्पिटिटिव और अनकॉम्पिटिटिव इनिबिशन को लेकर के, जो हम थोड़ा याद रखेंगे। शायद आप लोगों ने इसको पढ़ा भी होगा ड्यूरिंग योर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम और ड्यूरिंग योर पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम। तो इम्पोर्टेंट चीज दूसरी हम ये भी डिस्कस करेंगे, एक क्वेश्चन भी GSBT हमने जो क्वेश्चन बैंक हमको दी थी उसमें भी एक क्वेश्चन ऐसा पूछा गया है जिसमें हमें ये जो हम डिस्कस करेंगे आने वाले स्लाइड्स में, कि अगर मान लो हम ये कहते हैं कि भाई इन द प्रेजेंस ऑफ कॉम्पिटिटिव इनिबिशन Km डिक्रीज हुआ तो वो कितना हुआ, विथ हाउ मच फैक्टर दैट Km इज रिड्यूस्ड। अगर Vmax डिक्रीज हुआ तो वो कितने फैक्टर से डिक्रीज हुआ, राइट?
और जब भी हम इनिबिशन स्टडीज की बात करते हैं तो जितने भी एंजाइम के जो ये नॉर्मल पैरामीटर्स हैं जैसे Vmax या Km है, उसके अलावा एक दूसरा भी इम्पोर्टेंट पैरामीटर जो मायने रखता है वो एक Ki, that is the dissociation constant of enzyme with inhibitor. That is the dissociation constant of enzyme with inhibitor, which will tell us that how strongly your inhibitor is going to bind with your enzyme. और इसको determine कैसे करते हैं? We can take different inhibitor concentration and we will perform the plotting of the 1/V versus the concentration of the inhibitor, and whatever the graph which we will draw, the intercept on the x-axis will give us the value of Ki, right? जैसे हमने अभी जब हेंस वुल्फ प्लॉट देखा तो हेंस वुल्फ प्लॉट में हमने देखा कि x एक्सिस पे किस तरीके से हमें -Km का वैल्यू मिल रहा था। उसी तरह अगर हम सबस्ट्रेट की जगह अगर इनिबिटर के अलग अलग कॉन्सेंट्रेशन को लेकर के हम अगर ग्राफ प्लॉट करते हैं 1/V वर्सेस different concentration of inhibitor, then we will be able to get the value of Ki, that is the dissociation constant of the enzyme inhibitor complex. तो ये जो Ki वैल्यू है वो भी हमको ये बताएगी कि आपका जो इनिबिटर है वो कितना स्ट्रांगली एंजाइम को बाइंड कर रहा है और कितना स्ट्रांगली वो एंजाइम को इनिबिट कर रहा है, राइट? तो ये एक थोड़े से ब्रीफ जो समराइज हमें जो करना चाहिए था बिफोर गोइंग टू दी मॉडल क्वेश्चंस। थोड़े बहुत मॉडल क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे अभी, तो वो थोड़ा सा आपको मैंने इसलिए समराइज कर दिया ताकि जब हम क्वेश्चंस पे आए तो ये सब चीज़ों के बारे में अगर आपको पता हो तो हम लोग ठीक से क्वेश्चन को इंटरप्रेट कर पाएंगे। सो लेट अस गो थ्रू दी सम ऑफ दी मॉडल क्वेश्चंस व्हिच आर देयर। सो the question states that which of the following statement is correct for competitive inhibitor? Which of the following statement is correct for the competitive inhibitor? P, they are usually small molecules. Q, they are water soluble. R, resembles transition state intermediates. S, reversed if the substrate concentration is increased. Right, 4 different options are given. So we have to say that only P is correct, or only Q is correct, or only R is correct, only S is correct, or all are correct. Let us see. We have to tell them that only P, Q and R are correct, only P and S is correct, only P and R is correct, or all the statements given, they all are correct. अच्छा, तो इसका आंसर आप कर पाओगे अभी? Will you be able to answer this? Sir, can you please go back to previous slide? Yes. That question. Thank Yeah. you, sir. See, these are the statements which are given with respect to the question stated above. P and S. Which of the following statement is correct for competitive inhibitor? They are usually small molecules. They are water P and soluble. S. PS question. Resemble transition state intermediate. देखिए competitive inhibition है तो resemblance का तो कुछ मामला होगा ना. Competition वो कब करेगा? जब वो सबस्ट्रेट के किसी न किसी फॉर्म के साथ रिजेंबल करेगा तभी करेगा। Yes sir. हाँ, तो आर आप क्यों नहीं बता रहे हो? राइट और एंजाइम वाटर सॉल्युबल एक्वेस फेज में जनरली रिएक्ट करते हैं, राइट? तो कंडीशन ये भी है कि आपका जो इनिबिटर है वो वाटर सॉल्युबल होना चाहिए, तभी जा करके वो एंजाइम के साथ बाइंड कर पाएगा। एक्वेस फेज में जब आपके रिएक्शंस होते हैं, इवन सेल के अंदर भी एक्वेस फेज में ही रिएक्शंस होते हैं, तो आपका इनिबिटर वाटर सॉल्युबल भी होना चाहिए अगर उसे रिएक्शन सिस्टम में जा करके एंजाइम के साथ बाइंड करना है। यूजुअली स्मॉल मॉलिक्यूल्स होते हैं ये सभी, राइट? दे आर स्मॉल मॉलिक्यूल्स। तो मेरे हिसाब से जो इसका आंसर है, राइट, वो ऑल द स्टेटमेंट्स होना चाहिए। दे आर यूजुअली स्मॉल मॉलिक्यूल, यूजुअली लिखा है, ऑलवेज नहीं लिखा है, राइट? यूजुअली स्मॉल मॉलिक्यूल्स
they are water soluble, they resemble transition state intermediates, and reversed if substrate concentration is increased. राइट, तो मेरे हिसाब से इसका जो आंसर है राइट वो होना चाहिए डी, दैट इज ऑल द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। राइट, क्योंकि जब तक आपका जो इनिबिटर है वो सॉल्यूशन में नहीं जाएगा, वो एंजाइम के साथ कैसे बाइंड कर पाएगा? इफ इट, अगर वो इनसॉल्युबल है तो इट इज नॉट इन द सॉल्यूशन, योर एंजाइम इज इन द सॉल्यूशन, राइट? सो इफ इट इज इनसॉल्युबल देन हाउ इट कैन रिएक्ट विद द एंजाइम? ये तो काफी प्राइमरी कंडीशन है। किसी भी इनिबिटर को अगर एंजाइम को इनिबिट करना हो तो आपका एंजाइम और इनिबिटर एक ही फेज में होना चाहिए ना, they should be present in the same phase. So if your enzyme is in the aqueous phase, your inhibitor must be present in the aqueous phase, then and then only it can go and bind to the enzyme, right? So water soluble भी होना competitive inhibitor के लिए जरूरी होगा अगर enzyme को उसे inhibit करना है, right? So according to me the correct answer is D, that all the different statements which are given are correct. आपको ये क्वेश्चन समझ में आया? Yes, sir. ओके, तो आगे बढ़ते हैं, दूसरा क्वेश्चन लेते हैं इनिबिशन से। सी यहाँ पे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछा गया है, और ये क्वेश्चन हमें GSBTM से जो क्वेश्चन बैंक मिला था उसका है, जिसको यहाँ पे सॉल्व करने का प्रयास किया गया है। That the kinetic of an enzyme in the presence and absence of inhibitor is mentioned in the form of intercept on the x-axis of Line-Weaver-Burke plot. Right, एक Line-Weaver-Burke plot से inhibition kinetics को represent करने का प्रयास किया गया है, और intercept के बारे में बात की गई है। That intercept in the presence of inhibitor is 2. Intercept इन द प्रेजेंस ऑफ इनिबिटर, और कौन से एक्स पे बात की गई है? एक्स एक्सिस के बाद के हवाले से यहाँ पे बात की गई है। दैट इंटरसेप्ट इन द प्रेजेंस ऑफ इनिबिटर इज 2 एंड इंटरसेप्ट इन द एब्सेंस ऑफ इनिबिटर इज 4, राइट? दिस इंटरसेप्ट इज विथ रिस्पेक्ट टू द एक्स एक्सिस, राइट? तो इन द प्रेजेंस ऑफ इनिबिटर ये इंटरसेप्ट का वैल्यू 2 है, और in the absence of inhibitor is intercept का वैल्यू 4 है। अब यहाँ पे इनिबिटर का कॉन्सेंट्रेशन दिया है, that if the concentration of inhibitor is 3 into 10 raised to minus 3 molar, then what will be the dissociation constant for the enzyme inhibitor complex? अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको briefly बताया था about the एंजाइम इनिबिटर कॉम्प्लेक्स, थोड़ा सा ब्रीफली आपको ये बताया गया था, और हमने ये भी डिस्कस किया कि ये Ki का जो वैल्यू होगा वो डिटरमाइन करेगा कि कितना स्ट्रांगली आपका इनिबिटर जो है वो एंजाइम के साथ बाइंड हुआ है, राइट? तो यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि अगर ये कंडीशन है लाइन-वीवर-बर्क प्लॉट की, that in the presence and in the absence of inhibitor the intercept on the x-axis is 2 and 4 respectively, and if the concentration of the inhibitor is 3 into 10 raised to minus 3 molar, then what will be the dissociation constant for EI complex? अच्छा, आपने अंडर ग्रेजुएट लेवल पे एंजाइम इनिबिशन पढ़ा है, राइट? अभी हमने अलग अलग काइनेटिक पैरामीटर्स की भी बात की, अलग अलग कंपटीशन, रिवर्सिबल कंपटीशन के हवाले से, कि अगर कॉम्पिटिटिव इनिबिटर है तो Km इंक्रीज होगा लेकिन Vmax में कोई चेंज नहीं होगा। अगर नॉन कॉम्पिटिटिव इनिबिटर है तो Km जो है वो एज इट इज रहेगा, Vmax डिक्रीज होगा, और अगर अनकॉम्पिटिटिव इनिबिटर है तो Km और Vmax दोनों डिक्रीज होंगे। तो ये इंक्रीज और डिक्रीज जो काइनेटिक पैरामीटर का हो रहा है उसको हम Ki के साथ सीधा कोरिलेट कर सकते हैं, राइट? फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं ये कहता हूँ कि Km जो है वो इंक्रीज हुआ तो कितने फैक्टर से इंक्रीज हुआ, कोई बता सकता है? अगर मैं ये कहता हूं कि कॉम्पिटिटिव इनिबिशन में Km इंक्रीज हुआ बाय व्हाट फैक्टर?
शायद आपने इसको अंडर ग्रेजुएट लेवल पे पढ़ा हो. यस, एनी आइडिया? जब मैं ये कहता हूं कि नॉन कॉम्पिटिटिव इनिबिशन में Vmax डिक्रीज हुआ तो कितने फैक्टर से वो डिक्रीज हुआ, अगर ये मुझे देखना हो तो मुझे कौन सी वो टर्मिनोलॉजी है जिसका मुझे इस्तेमाल करना पड़ेगा? यस, कोई बता सकता है? ओके, एनी हाउ लेट अस गो टू द सॉल्यूशन स्लाइड. आपको क्वेश्चन समझ में आ गया? पहले आप ये बताइए, देन वी कैन मूव फर्दर. Question is clear to you? Yes, sir. We just have to find out the Ki value. और ये Ki वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए जो हमें डेटा दिया गया है वो क्या है? इनिबिटर का कॉन्सेंट्रेशन और उस इनिबिशन के प्रेजेंस में जो लाइन वीवर वर्क प्लॉट हमने ड्रॉ किया उसके इंटरसेप्ट्स इन द प्रेजेंस एंड इन द एब्सेंस. राइट. अब देखिए यहाँ पे एक्स एक्सिस पे 2 इंटरसेप्ट दिए गए हैं, उसका मतलब ये कॉम्पिटिटिव इनिबिशन होगा या नहीं होगा? डू यू एग्री विथ माय स्टेटमेंट that this enzyme is competitively inhibited by the inhibitor as there are 2 intercepts given on the x-axis? Do you agree with my statement? आप मेरे स्टेटमेंट से एग्री करते हो? Yes, sir. Yes, sir. देखो एक्स एक्सिस पे 2 इंटरसेप्ट दिए गए हैं ना, 2 और 4, तो ये कब पॉसिबल हो पाता है? इफ एंजाइम इज कॉम्पिटिटिवली इनिबिटेड, क्योंकि उसका जो डायग्नोस्टिक लाइन वीवर वर्क प्लॉट है उसमें हमें एक्स एक्सिस पे 2 इंटरसेप्ट्स मिलते हैं. राइट. So here, since 2 different intercepts are given, whatever the inhibitor which has been shown over here is competitively inhibiting this enzyme. That is very much sure from what the data is telling to us. But what we have been asked to find out, we have been asked to find out what is the Ki value. तो solution की slide पे अपन थोड़ा जाते हैं. See what is given. Intercept in the presence of inhibitor is 2 and intercept in the absence of inhibitor is 4. It means this is given to us. Intercept in the presence of inhibitor, let us designate that as -1 upon Km dash is equal to -2. So if we find out the value of Km in the presence of inhibitor, then it will be Km is equal to 1 upon 2 and that is equal to 0.5. So from this intercept what we have found? We have found out the value of Km and that corresponds to 0.5. That corresponds to 0.5 because the intercept on x-axis is given in the presence of inhibitor. So this Km value corresponds to the Km value in the presence of inhibitor, and similarly we can find out the value of Km in the absence of inhibitor where the x-intercept is given as 4. तो अगर हम ये find out कर लेते हैं तो in the absence of inhibitor the value of Km is 0.25. So here also we can see that in the presence of inhibitor Km doubles, Km increases. It means it is a competitive inhibition. Now the question is that how these values can be used to find out the value of dissociation constant of enzyme and inhibitor, and that is Ki value. Right. तो ये फॉर्मूला आपको याद रखनी है. उसके लिए जब हम ये कहते हैं कि कॉम्पिटिटिव इनिबिशन के अंदर Km बढ़ता है, कॉम्पिटिटिव इनिबिशन के अंदर Km जो है वो बढ़ता है, तो ये आपका जो Km डैश है या Km एफ है, that corresponds to the original Km multiplied by 1 plus I upon Ki. How much increase in the Km will be there in the presence of inhibitor with the factor of 1 plus I upon Ki, where I is the concentration of the inhibitor and Ki is the dissociation constant which we want to find out. Right. Now see, we have find out the value of Km in the presence of inhibitor. We have found out the value of Km
in the absence of inhibitor on the data which is given in terms of the intercept values on the x-axis. So what we have to do, we just have to plug in the values of Km in the presence of inhibitor, Km in the absence of inhibitor, and this I value is already given as a concentration of inhibitor in the question itself. So if we plug in those values, we will have this kind of equation that 0.5 is equal to 0.25 into 1 plus 3 into 10 raised to the power minus 3 divided by Ki. So if we derive this equation for Ki, जो Ki ने આપણે સૂત્રનો કરતા બનાવીએ, જે આપણે શોધવું છે, right? In that case, we will be having these kind of relationship, and the value of Ki, if you will solve this equation, the value of Ki will be 15 into 10 raised to the power minus 4. तो हमने किया क्या है यहाँ पे, that we have derived the equation for the Ki. इस टर्म को हम यहाँ ले गए, इस तरफ ले गए, और जब हमने उसको सिंप्लीफाई किया, हमें Ki का वैल्यू मिल गया, and the value of Ki is 15 into 10 raised to minus 4, which represents the dissociation constant of enzyme inhibitor complex. देखिए ये तो कॉम्पिटिटिव इनिबिशन की बात हुई, राइट? कि भाई अगर Km इंक्रीज हो रहा है तो कितना इंक्रीज हो रहा है, बाय द फैक्टर ऑफ 1 प्लस आई अपॉन Ki. लेकिन अगर Km डिक्रीज हो रहा है, जैसे अनकॉम्पिटिटिव इनिबिशन में हो रहा है, या Vmax अगर डिक्रीज हो रहा है, तो कितने फैक्टर से होगा? तो जब हम डिक्रीज की बात करेंगे तो उस पैरामीटर को हम 1 प्लस आई अपॉन Ki से डिवाइड करेंगे. जब हम ये कहेंगे कि नॉन कॉम्पिटिटिव इनिबिशन में Vmax डिक्रीज हुआ, तो कितना हुआ? Vmax को हम डिवाइड करेंगे 1 प्लस आई अपॉन Ki से, मतलब कितने फैक्टर से वो डिक्रीज हुआ? 1 अपॉन 1 प्लस आई अपॉन Ki के फैक्टर से वो डिक्रीज हुआ, राइट? तो जब हम डिक्रीज की बात करेंगे तो ये 1 प्लस आई अपॉन Ki के फैक्टर को हम डिन्यूमरेटर में रखेंगे, और जब हम इंक्रीज की बात करेंगे तो हम ये 1 प्लस आई अपॉन Ki के फैक्टर को मल्टीप्लीकेशन वाले मोड में रखेंगे विद दैट पर्टिकुलर काइनेटिक पैरामीटर, राइट? तो जैसे यहाँ पे कॉम्पिटिटिव इनिबिशन में Km इंक्रीज हो रहा है, तो कितना इंक्रीज हो रहा है? बाय द फैक्टर ऑफ 1 प्लस आई अपॉन Ki. कोई पर्टिकुलर इनिबिशन में Vmax डिक्रीज हो रहा है, तो कितना डिक्रीज हो रहा है? बाय द फैक्टर ऑफ 1 प्लस आई अपॉन Ki. लेकिन वो चला जाएगा डिन्यूमरेटर में, राइट? सो वी विल राइट दैट द Vmax in the presence of inhibitor or Vmax dash or Vmax app is equal to Vmax divided by 1 plus I upon Ki. तो यहाँ पे जो डेटा x एक्सिस के इंटरसेप्ट के हवाले से दिया गया है, वो अगर y इंटरसेप्ट के हवाले से अगर दिया गया होता तो भी आप उस पर्टिकुलर इनहिबिटर का डिसोसिएशन कांस्टेंट डिटरमाइन कर सकते थे, क्योंकि वहां पे आपको इस फैक्टर को डिन्यूमरेटर में ले जाने का रहता, और उसको जब आप इक्वेशन को सिंप्लीफाई करके इंटरसेप्ट के ऊपर से Vmax का वैल्यू निकाल करके उसको प्लग इन करके इसी मेथड से अगर आप उसको सॉल्व करते तो वहां पर भी आपको Ki का वैल्यू मिल जाता. मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल आपको दिखा दिया. अब ये क्वेश्चंस जो है वो आपको अगर y इंटरसेप्ट के हवाले से पूछा जाता है या Vmax फाइंड आउट करके पूछा जाता है, तो आपको ये याद होना चाहिए कि जो यहाँ मुझे इनिबिशन दिया गया है उसमें Vmax के 2 इंटरसेप्ट दिए गए हैं, मतलब y एक्सिस के मुझे 2 इंटरसेप्ट दिए गए हैं. उसका मतलब बात की गई है नॉन कॉम्पिटिटिव इनिबिशन की या अनकॉम्पिटिटिव इनिबिशन की, राइट? तो यहाँ पे जो भी मुझे Vmax का वैल्यू मिला, उसमें जो मुझे इनिबिटर के प्रेजेंस में Vmax का वैल्यू मिला, उससे मुझे 1 प्लस आई अपॉन Ki से डिवाइड करना पड़ेगा, और वहां जा करके मैं Ki को मेन टर्म ले करके दूसरे पैरामीटर्स की वैल्यू अगर रख देता हूं तो मुझे Ki का वैल्यू वहां पे मिल सकता है, राइट? तो ये Ki का वैल्यू हमें बताएगा कि व्हाट इज द हाउ स्ट्रांगली योर इनहिबिटर इज इनहिबिटिंग द एंजाइम ऑफ योर इंटरेस्ट. तो आपको ये एक्सप्लेनेशन समझ में आया? यस सर. Yes, sir. अच्छा, यहाँ Km की जगह Vmax पूछा होता और y इंटरसेप्ट दिए होते तो आप कौन सा, मतलब आपको क्या करना है वो समझ में आया? Yes, sir.
अगर यहाँ जो x एक्सिस के इंटरसेप्ट की बात की है उसकी जगह अगर y एक्सिस के इंटरसेप्ट दिए होते तो आपको Vmax कैलकुलेट करना पड़ता, और अगर Vmax डिक्रीज हो रहा होता तो आपने जो 1 प्लस आई अपॉन के आई से मल्टीप्लाई किया है उसकी जगह उससे डिवाइड करना होता, क्योंकि Vmax डिक्रीज हो रहा है। जब हम डिक्रीज की बात कर रहे हैं तो बाय हाउ मच फैक्टर, बाय द फैक्टर ऑफ 1 प्लस आई अपॉन 1 प्लस आई अपॉन के आई। जब हम इंक्रीज की बात करेंगे हाउ मच इंक्रीज, सो बाय द फैक्टर ऑफ मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस आई अपॉन के आई। राइट, देखो किसी भी चीज को आप 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो उसकी तो सेम रहेगी ना वैल्यू। किसी भी चीज को, किसी भी पैरामीटर को आप सिर्फ 1 से मल्टीप्लाई करोगे या 1 से डिवाइड करोगे तो उसमें कोई चेंज नहीं आएगा ना, वो टर्म तो वैसे का वैसा ही रहेगा। तो यहाँ पे ये जो टर्म है वो 1 प्लस आई अपॉन के आई है, मतलब 1 प्लस समथिंग है ना, 1 प्लस समथिंग है। इसका मतलब क्या है कि के एम जो है वो इंक्रीज हो रहा है, ये इसका मतलब काउंटर आर्ग्यूमेंट हुआ। किसी भी पैरामीटर को आप 1 से मल्टीप्लाई करो तो वो इतना का इतना ही रहेगा, लेकिन जब कॉम्पिटिटिव इनिबिशन होता है तो ये वैल्यू 1 प्लस आई अपॉन के आई जितनी होती है, मतलब 1 से ज्यादा होती है। और अगर किसी भी चीज को आप 1 से ज्यादा की वैल्यू से मल्टीप्लाई करो तो वो इंक्रीज ही होगा ऑब्वियसली। आपको समझ में आया लॉजिक? हेलो? Yes, sir. Okay, so I hope that this solution is clear to all of you. Let us move further. Okay, this is very interesting question. See, LB plot is given in the presence of two inhibitors A and B. So here you can see that this is the control. This line represents control on the LB plot where no inhibitor is there. This line indicates the line LB plot in the presence of inhibitor A, and this indicates the LB plot in the presence of inhibitor B. So as we can see that there are three different intercepts on the x-axis, and since it is a one intercept on the y-axis, so can you tell me that how A and B are inhibiting this enzyme? What can be the mode of reversible inhibition? What is the mode of reversible inhibition here? Can you tell me? Competitive. So A and B both are inhibiting competitively this enzyme. Do you agree with me? Yes, sir. Yes, you are right. Because see, A and B both are inhibiting this enzyme competitively, right? So, but the question is not that much simple. Let us go to the question now. ये क्वेश्चन एक्चुअली ये नहीं पूछा गया है, ये तो मतलब एक्सपेक्ट किया गया है कि ये ग्राफ को देख करके आपको पता चल जाएगा that inhibitor A and inhibitor B inhibiting the enzyme competitively. What the question states? Question states this, that in the Line-Weaver-Burke plot for an enzyme, substrate and inhibitor, plot B is for. Plot B is for. Now let us scrutinize all these four options very carefully. A, non-competitive inhibitor at higher concentration than plot A, competitive inhibitor at lower concentration than plot A, competitive inhibitor at higher concentration than plot A, and uncompetitive inhibitor. राइट, अब देखिए जिस हिसाब का लाइन-वीवर-बर्क प्लॉट दिया गया है उसके हिसाब से ए और डी ऑप्शन तो स्टैंड ही नहीं करते कहीं पे। वी कैन आउटराइटली रिजेक्ट ऑप्शन ए एंड डी बिकॉज द एलबी प्लॉट व्हिच इज गिवन is representing the competitive inhibition. So either B is correct or C is correct. Do you agree with this statement? Yes, sir. Yes, sir. तो Yes, sir. हाँ, B और C में से कोई एक करेक्ट होगा, राइट? B और C में क्या कहा गया है? That competitive inhibitor at lower concentration than plot A and competitive inhibitor at higher concentration than plot A. देखिए अब मैं आपको एक यहाँ पे क्लैरिफाई कर दूं कि अगर इनहिबिटर स्ट्रांग होगा,
तो कम कॉन्सेंट्रेशन पे वो एंजाइम को इनिबिट करेगा, और अगर वो एंजाइम को स्ट्रांगली इनिबिट कर रहा है तो लाइनवीवर बर्ग प्लॉट की जो लाइन होगी ना, वो वाई एक्सिस की तरफ ज्यादा मुड़ी हुई होगी, मतलब इट विल बी मोर टुवर्ड्स द वाई एक्सिस देन टुवर्ड्स द एक्स एक्सिस। देखिए, इनिबिशन की जैसे जैसे इफेक्ट बढ़ेगी ना, इनिबिटर का जैसे जैसे पावर बढ़ेगा, जैसे जैसे उसकी इफेक्टिविटी बढ़ेगी, वो लाइन है वो वाई एक्सिस की तरफ जो है वो ज्यादा बायस्ड रहेगी। मतलब वो जो लाइन वाई एक्सिस की तरफ ज्यादा बायस्ड है, ज्यादा मतलब इंक्लाइंड है, वो इनिबिटर उस एंजाइम को स्ट्रांगली इनिबिट कर रहा है। अब वाई एक्सिस पे क्या है ये आप मुझे बताइए, लाइन वीवर बर्ग प्लॉट में 1/v है, एलबी प्लॉट में वाई 1/v है। Yes, अगर sir. अगर 1/v ज्यादा है तो उसका मतलब v बहुत कम होगा। Yes, sir. As it is in denominator. हाँ, यस यस यस, इट इज अ रेसिप्रोकल वैल्यू, राइट। तो अगर आपकी कोई कोई पर्टिकुलर प्लॉट इन द प्रेजेंस ऑफ इनिबिटर वाई एक्सिस की तरफ जो ज्यादा है, राइट, वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग इनिबिटर होगा एज कंपेयर टू द इनिबिटर जिसका जिसकी लाइन वीवर बर्ग प्लॉट की लाइन का एक्स एक्सिस के तरफ झुकाव ज्यादा है। डू यू एग्री विथ माय स्टेटमेंट? यस सर। हाँ सर. ये समझ में आया आपको? देखिए, 3-4 लाइन आपको ड्रॉ करके दिखाई गई है। तो जो लाइन वाई एक्सिस की तरफ ज्यादा है, वाई एक्सिस से आप शुरू करो तो पहले जो लाइन आएगी वो लाइन जो है वो एंजाइम को स्ट्रांगली इनिबिट करेगी, क्योंकि उसमें 1/v0 का वैल्यू ज्यादा है। 1/v0 का वैल्यू ज्यादा क्यों है? क्योंकि v0 का वैल्यू कम है। तो अगर हम वापस अपने उस पर्टिकुलर ग्राफ पे जाएं तो अब आप ये देख करके बताइए कि प्लॉट ए या प्लॉट बी में से किसका लाइन वाई एक्सिस की तरफ ज्यादा नजदीक है, प्लॉट बी का या प्लॉट ए का? बी। राइट, मतलब प्लॉट बी इफेक्टिवली इनिबिट कर रहा है एंजाइम को एज कंपेयर टू प्लॉट ए। यस सर। डू यू एग्री विथ मी? देखो, आप यहां से भी कैलकुलेट कर सकते हो वैसे तो एक्स एक्सिस पे भी, लेकिन आपको उसमें टाइम लगेगा। आपको यहाँ पे कुछ वैल्यू सोच के रखनी पड़ेगी, फिर उसमें से km कैलकुलेट करना पड़ेगा, उसमें ज्यादा टाइम चला जाएगा। उससे बेटर क्या है कि आप ये याद रखिए कि जो इनिबिटर लाइन वीवर बर्ग प्लॉट में ऐसा लाइन दिखाता है जो वाई एक्सिस के ज्यादा नजदीक है, वो उस एंजाइम को कम कॉन्सेंट्रेशन में भी स्ट्रांगली इनिबिट करता होगा। आर यू गेटिंग इट? राइट, क्योंकि हाँ, Yes, sir. तो अब आप मुझे बी और सी देख करके बताइए कि सही आंसर क्या होगा। B. Sir, B. बी। सभी लोग बी से एग्री कर रहे हैं? लेट अस सी व्हाट इज द करेक्ट आंसर। यस, यू आर राइट, करेक्ट आंसर इज बी। करेक्ट आंसर बी इसलिए है क्योंकि बी जो है, इनिबिटर बी जो है वो ए से ज्यादा एफिशिएंट है, ज्यादा स्ट्रांग है, राइट। और उसका अगर आप झुकाव देखो, उस लाइन का अगर आप झुकाव देखो तो वाई एक्सिस की तरफ ज्यादा है। वाई एक्सिस की तरफ उसका झुकाव इसलिए ज्यादा है क्योंकि 1/v0 का वैल्यू ज्यादा है, और 1/v0 का वैल्यू इसलिए ज्यादा है क्योंकि v का वैल्यू कम है, राइट। तो ये आप याद रखना, आप मैन्युअली अपने दिमाग से एक्स एक्सिस पे भी बी और ए को फॉलो करके वैल्यू लिख करके मैन्युअली कैलकुलेट करके भी ये आंसर तक पहुंच सकते हो, लेकिन उसमें टाइम लगेगा। और आपने अगर इंटरसेप्ट को गलती से आइडेंटिफाई कर दिया, ए के इंटरसेप्ट को बी का समझ लिया और बी के इंटरसेप्ट को अगर ए का समझ लिया, देन यू विल कम अप विद द रॉन्ग आंसर। Rather than doing this, what you should do, you should see that which line of the inhibitor is more nearer to the y-axis, right? और उसको पकड़ करके आप डिटरमाइन कर सकते हो कि कौन सा इनिबिटर कम कॉन्सेंट्रेशन में भी एंजाइम को स्ट्रांगली इनिबिट करता है। जो वाई एक्सिस की तरफ ज्यादा झुका हुआ है वो एंजाइम को स्ट्रांगली इनिबिट कर सकता है, राइट। तो इससे आप ये पता लगा सकते हो। तो ये क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन आपको समझ में आया? यस सर। ओके, तो Yes, थोड़ा आगे बढ़ते हैं। ओके, which of the following are true when diisopropyl fluorophosphate, that is DIPF, inhibits chymotrypsin activity? Chymotrypsin is a proteolytic enzyme.
it is a serine protease, and it is inhibited by DIPF. Now this DIPF is a irreversible inhibitor. मैंने आपको उसका एक एग्जांपल भी दिया था जब हम irreversible inhibitor के बारे में डिस्कशन कर रहे थे, and we have discussed that these irreversible inhibitors they are used for the active site mapping, right? अगर आपको फाइंड आउट करना हो कि एंजाइम की एक्टिव साइट पे कौन सा कैटालिटिक रेसिड्यू है, तो ऐसे इरिवर्सिबल इनहिबिटर्स की मदद से ये आइडेंटिफाई किया जा सकता है. नाउ दिस काइंड ऑफ इरिवर्सिबल इनहिबिटर विथ रिस्पेक्ट टू दिस, चार यहाँ पे स्टेटमेंट्स जो हैं वो दिए गए हैं. That ET decreases, ET means total enzyme concentration decreases. This is the first statement. Q, Vmax decreases. R, Km decreases. And S, Vmax increases. तो यहाँ पे जो S है वो तो किसी भी हालत में सही नहीं लग रहा, क्योंकि जब भी कोई इरिवर्सिबल इनहिबिटर एंजाइम को बाइंड करता है तो Vmax तो उसका कम होगा ही. यहाँ पे ऑप्शन जो दिया गया है S, Vmax increases, वो किसी भी सूरत में सही नहीं हो सकता, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट द इनहिबिटर, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द एक्टिवेटर, राइट? सो दैट्स व्हाई द क्वेश्चन इज दैट either P is correct or Q is correct or R is correct or something like that, right? So if we scrutinize all these options carefully, I have told you earlier that the irreversible inhibitors, they are active site directed inhibitors. They are also known as active site directed inhibitors. मतलब जब भी आप एंजाइम को किसी भी irreversible inhibitor के साथ एक्सपोज करोगे तो वो हमेशा उसकी एक्टिव साइट पे जाकर ही बाइंड होंगे, और इसीलिए उनका यूज जो है वो एक्टिव साइट मैपिंग में होता है. दैट इज व्हाट वी हैव डिस्कस्ड, दैट द इरिवर्सिबल इनहिबिटर्स आर वाइडली यूज्ड इन द एक्टिव साइट मैपिंग. उसके पीछे का रीजन भी यही है, दैट द इरिवर्सिबल इनहिबिटर्स दे आर एक्टिव साइट डायरेक्टेड इनहिबिटर्स, राइट? तो क्योंकि वो एक्टिव साइट को ऑक्यूपाई कर लेते हैं, सबस्ट्रेट बाइंडिंग के लिए तो कोई स्कोप रहता ही नहीं है. तो फिर Km को इंक्रीज या डिक्रीज होने का, Km डिक्रीज होने का तो कोई सवाल ही नहीं है, बिकॉज इफ Km डिक्रीजेस एफिनिटी इंक्रीजेस. जब आपका एक्टिव साइट ही ब्लॉक हो गया है तो सबस्ट्रेट बाइंडिंग का कोई प्रश्न उठता ही नहीं है, और उसकी वजह से जो Km है वो डिक्रीज होने का कोई सवाल ही नहीं है इन द प्रेजेंस ऑफ इरिवर्सिबल इनहिबिटर लाइक DIPF. सो नाउ ऑन द बेसिस ऑफ दिस आर्गुमेंट, व्हाट डू यू थिंक, व्हिच ऑप्शन इज करेक्ट? आपने ये क्वेश्चन को समझा और आर्ग्यूमेंट को ठीक से सुना क्या? Yes. Option Yes, which option is clear? Correct? A, sir. A. Right, A option is correct, that the total enzyme concentration decreases as well as Vmax also decreases. It has nothing to do with the Km, right? Km डिक्रीज होने का तो कोई सवाल ही नहीं होता है, क्योंकि एक्टिव साइट को ब्लॉक करके रखता है ये इनहिबिटर, irreversible inhibitor. So that's why the correct answer is A, that P and Q only ET decreases and Vmax decreases. तो MCQ जो पूछे जाते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, उसमें कभी आप ये देखोगे कि एक से ज्यादा ऑप्शन भी करेक्ट है, राइट? और अगर इस तरीके का क्वेश्चन है तो वो इसी फॉर्मेट में पूछा जाता है, that whether P is correct, whether Q is correct, P, Q, R is correct, all these statements are correct. So it is possible that in the competitive examination you have more than one statements or the options which are correct, right? So here the answer is A. See, this is one of the important question which I thought that I should discuss with you, and this is related to the calculation of turnover number, because these kind of questions are also asked in the competitive examination. We have defined what is turnover number in the last lecture. We have discussed that how many number of product molecule are formed per molecule of the enzyme per second or per minute. That is known as turnover number. And turnover number will also tell us that once the substrate will bind to the enzyme, how fast that substrate will get converted into the product, right? So
यहाँ पे एक जो क्वेश्चन मैंने लिया है दैट इज रिगार्डिंग द कैलकुलेशन ऑफ टर्नओवर नंबर ऑफ दैट पर्टिकुलर एंजाइम, राइट? Let us read the question first and then we will go to the solution. The question states that a solution of 1% starch at pH 6.7 is digested by 15 microgram of beta amylase. Beta amylase is the enzyme जिसका molecular weight हमको दिया गया है 1,52,000. Now the rate of maltose, that is the maltose which is the product of the starch. We know that when beta amylase will act upon the starch, it will release maltose. So the rate of maltose release had an initial velocity of 8.5 milligram per minute. This is the data which is given to us. And the question states that how much product is formed per enzyme molecule every minute. So indirectly they have asked us to calculate the turnover number per minute. That in 1 minute, one enzyme molecule will liberate how much maltose? How many molecules of maltose are liberated per minute by 15 microgram of by per molecule of enzyme per minute. तो इनडायरेक्टली हमें पूछा क्या गया है? इनडायरेक्टली हमें केकेट के बारे में पूछा गया है. वी हैव टू कैलकुलेट द केकेट. तो अगर आपको केकेट का डेफिनेशन पता है तो ये क्वेश्चन देख करके आपको पता चल जाएगा that we have been asked to calculate KCAT. आपको क्वेश्चन समझ में आया? यस सर. तो KCAT का एक फॉर्मूला हमने डिस्कस किया था लास्ट लेक्चर में. कौन बता सकता है? How we can determine KCAT for any enzyme? Sir, is it Vmax upon ET, total enzyme concentration? Yes, it is Vmax. Another one formula is also there. I don't remind it. Okay, Vmax upon total enzyme concentration is the correct formula. See, but if we want to determine the velocity of the enzyme, Vmax is nothing but the maximum velocity, right? How we can determine the velocity of any enzyme? In terms of the micromoles of product released per minute per ml of enzyme, right? We always express enzyme unit in terms of micromoles of product. If I want to define 1 unit of enzyme, then how can I define? 1 ml of enzyme when liberate 1 micromole of product per minute, then I can say that yes, 1 unit of enzyme is present in my solution. See, enzyme is a functional protein. So when you determine the concentration of the enzyme, that is determined in terms of the units. That is determined in terms of the units. And unit definition of the enzyme, you must be knowing that how much micromole of product is formed by 1 ml of enzyme per minute or by ml of enzyme per minute, right? अब यहाँ पे हमें जो डेटा दिया गया है वो मिलीग्राम में दिया गया है. प्रोडक्ट हमारा क्या है? यहाँ पे प्रोडक्ट है हमारा माल्टोज. कितना माल्टोज वो रिलीज करता है पर मिनट? 8.5 मिलीग्राम पर मिनट. तो पहले तो हमें इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा माइक्रोमोल्स में. तो कोई भी मिलीग्राम, ग्राम या माइक्रोग्राम, उसे मुझे अगर मिलीमोल, मोल या माइक्रोमोल में कन्वर्ट करना हो तो कैसे किया जा सकता है? एनी आइडिया? into 10 raised to minus 6. नहीं, माइक्रोमोल वो तो माइक्रोग्राम हो जाएगा. माइक्रोमोल में कन्वर्ट करना हो तो कैसे करूंगा? When I will say 1 mole of glucose, उसका मतलब क्या हुआ? कितना ग्राम ग्लूकोज हुआ? 180 grams. 180 ग्राम हुआ, राइट? तो यहाँ पे हमें माल्टोज की बात की गई है, 8.5 मिलीग्राम माल्टोज, और उसका मॉलिक्यूलर वेट भी दिया गया है 342. तो अगर मैं 8.5 मिलीग्राम को जो माल्टोज रिलीज हुआ है उसको अगर मैं उसके मॉलिक्यूलर वेट से डिवाइड करता हूं तो मुझे मिलीमोल्स में आंसर मिलेगा कि नहीं मिलेगा? Yes, sir. If I divide 8.5 मिलीग्राम जो माल्टोज रिलीज हो रहा है बीटा अमाइलेज के द्वारा,
if that is divided with the molecular weight of maltose, that is 342, then I will get the answer in terms of the millimoles. जब मैं मिलीग्राम को मोलेकुलर वेट से डिवाइड करता हूं तो मुझे मिलीमोल्स मिलेंगे. अगर मैं माइक्रोग्राम को मोलेकुलर वेट से डिवाइड करता हूं तो मुझे माइक्रोमोल मिलेगा. अगर मैं ग्राम्स को मोलेकुलर वेट से डिवाइड करता हूं तो मुझे मोल्स मिलेंगे. राइट, यू आर अवेयर विद दिस रिलेशनशिप, राइट? यस सर. तो हमें क्या करना पड़ेगा, that first of all we have to convert this product which has been given in terms of the 8.5 milligram per minute into micromoles. तो इसके सॉल्यूशन की स्लाइड पे अब हम आते हैं और हम देखते हैं कि ये चार जो ऑप्शन दिए गए हैं, that is 25 मिनट इनवर्स, 250 मिनट इनवर्स, 25,000 मिनट इनवर्स और 2,50,000 मिनट इनवर्स, इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है. इसके लिए हमें थोड़ा सा कैलकुलेशन करना पड़ेगा जो अपन करके सॉल्यूशन को डिराइव करने का प्रयास करते हैं. देखिए, दिस इज व्हाट विच इज गिवन टू अस. सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन इज गिवन, दैट इज 1% स्टार्च. एंजाइम कॉन्सेंट्रेशन इज ऑल्सो गिवन, 15 माइक्रोग्राम ऑफ बीटा अमाइलेज, उसका मॉलिक्यूलर वेट भी हमें दिया गया है. Vmax भी हमें दिया गया है, 8.5 मिलीग्राम ऑफ माल्टोज, मॉलिक्यूलर वेट माल्टोज का दिया गया है. और हमें पूछा गया है दैट व्हाट इज द केकेट वैल्यू. तो अगर हम इसको थोड़ा सा डिराइव करने का प्रयास करें तो वो कुछ इस तरीके से होगा. अभी किसी ने बताया दैट केकेट कैन बी कैलकुलेट बाय दिस फॉर्मूला. दिस केकेट इज इक्वल टू Vmax अपॉन ET. अगर ये फॉर्मूला है तो पहले हमें Vmax के लिए कैलकुलेशन करना पड़ेगा ऑन द बेसिस ऑफ दिस डेटा इन टर्म्स ऑफ द माइक्रोमोल और ET. राइट, देखिए क्वेश्चन में देखिए पर मॉलिक्यूल ऑफ एंजाइम, ये क्वेश्चन है दैट पर मॉलिक्यूल ऑफ एंजाइम हाउ मच मॉलिक्यूल ऑफ प्रोडक्ट्स आर रिलीज्ड. तो हमें एंजाइम का भी जो कॉन्सेंट्रेशन है उसको भी हमें मोल्स में या मिलीमोल्स में या माइक्रोमोल्स में ऐसे ही कन्वर्ट करना पड़ेगा. बिकॉज व्हाट इज द क्वेश्चन दैट पर मॉलिक्यूल ऑफ एंजाइम हाउ मच प्रोडक्ट मॉलिक्यूल आर रिलीज्ड, एंड दैट इज नथिंग बट द टर्नओवर नंबर ऑफ द एंजाइम. सो पहले अगर हम Vmax का अगर कैलकुलेशन करते हैं तो 8.5 को अगर हम उस माल्टोज के मॉलिक्यूलर वेट से डिवाइड करते हैं तो वो आंसर हमारे पास आएगा 0.025 मिलीमोल्स पर मिनट. तो यहाँ पे हमारा जो Vmax था उसको हमने मिलीमोल्स में कन्वर्ट किया है बाय डिवाइडिंग विद द 342 विच इज द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द माल्टोज. 8.5 मिलीग्राम माल्टोज है, उसको 342 से डिवाइड करोगे तो ये आंसर आएगा. देन हमें एंजाइम को भी मिलीमोल्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा. कैसे? एंजाइम का जो वैल्यू है वो माइक्रोग्राम में है, तो अगर हम उसको मिलीग्राम में कन्वर्ट करते हैं तो हमें उसको 10⁻³ से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. तो जब हम 10⁻³ से उसको मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे हमने यहाँ प्रोडक्ट को मॉलिक्यूलर वेट से डिवाइड किया, वैसे यहाँ हमें एंजाइम का जो ये मिलीमोल में जो हमें मिलीग्राम में जो कॉन्सेंट्रेशन मिला उसको भी हमें एंजाइम के मॉलिक्यूलर वेट से डिवाइड करना पड़ेगा. दैट इज 1,52,000. दैट इज द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द एंजाइम. तो जब हम इनको डिवाइड करेंगे हमारे पास जो फाइनल आंसर आएगा दैट विल बी 9.9 into 10⁻⁻8 millimoles. Right? So now what we can do, we can plug in these values in this particular equation, that is kcat is equal to Vmax upon ET. तो इसमें अगर हम ये वैल्यूज रख देते हैं तो kcat में Vmax का वैल्यू हमारा है 0.025 मिलीमोल्स और एंजाइम का इन टर्म्स ऑफ द मिलीमोल्स जो कॉन्सेंट्रेशन है वो है 9.9 into 10⁻⁻8. तो इसको अगर आप सिंप्लीफाई कर देते हो तो आपके पास ये आंसर आएगा 2.5 into 10⁻5 मिनट इनवर्स. क्योंकि जो मिलीमोल्स हैं वो कैंसल हो जाएंगे, सिर्फ मिनट रहेगा. सो मिनट इनवर्स विल बी दी unit of the turnover number
मिनट इनवर्स या सेकंड इनवर्स, जो भी आपको पूछा गया है। तो यहाँ पे ये जो है दैट corresponds to 2,50,000 minute inverse and that corresponds to your option number D, राइट। तो यहाँ पे आपको ये पता होना चाहिए कि एंजाइम यूनिट को हम डिफाइन कैसे करते हैं। अगर प्रोडक्ट माइक्रोग्राम या मिलीग्राम में दिया गया है तो उसे माइक्रोमोल्स में कैसे कन्वर्ट किया जाता है। एंजाइम का कॉन्सेंट्रेशन भी अगर माइक्रोग्राम या मिलीग्राम में दिया गया है तो एंजाइम को भी सबसे पहले उसके मॉलिक्यूलर वेट से डिवाइड करके उसी टर्मिनोलॉजी में, उसी यूनिट में हमें लाना पड़ेगा और तब जाके हम Vmax और ET का रेशियो जो है वो ले पाएंगे, Vmax by ET हम कर पाएंगे, राइट। सो दिस आंसर सजेस्ट दैट इन 1 minute beta amylase liberates 2,50,000 molecules of maltose from the 1% starch, right? So this is the turnover number of that particular enzyme called beta amylase. समझ में आया आपको ये? Yes, sir. Yes. Yes, sir. तो ये हाँ, तो सिर्फ ये Vmax by ET सिंपली कर नहीं देना है कि Vmax का कॉन्सेंट्रेशन उठाया, ET का कॉन्सेंट्रेशन उठाया और उसका रेशियो ले लिया, ऐसा नहीं। पहले आप उसको मोल्स में, मिली मोल्स में या माइक्रोमोल्स में कन्वर्ट करो, क्योंकि टर्नओवर नंबर का डेफिनेशन क्या है कि एक एंजाइम मॉलिक्यूल ने प्रोडक्ट के कितने मॉलिक्यूल बनाए, पर एंजाइम मॉलिक्यूल कितने प्रोडक्ट के मॉलिक्यूल्स बने, और उसकी वजह से आपको उस एंजाइम को कन्वर्ट करना पड़ेगा मोल्स में या मिली मोल्स में या माइक्रोमोल्स में, डिपेंडिंग अपॉन विच कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एंजाइम इज गिवन। और उसी तरह प्रोडक्ट को भी कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि वेलोसिटी या एंजाइम एक्टिविटी का डेफिनेशन क्या है, माइक्रोमोल्स और मिलीमोल्स ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म्ड पर ml ऑफ एंजाइम पर मिनट। तो जो भी Vmax के हिसाब से जो आपको प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन दिया गया है पर मिनट, उसको आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा मिलीमोल्स, माइक्रोमोल्स या मोल्स में, डिपेंडिंग अपॉन उसकी क्या वैल्यू दी गई है और क्या उसका यूनिट दिया गया है। और फिर आपको इन वैल्यूज को प्लग इन करना है Vmax में और ET में, तो आपको ये पता चलेगा कि पर मिनट कितने मॉलिक्यूल प्रोडक्ट बन रहा है पर मॉलिक्यूल ऑफ एंजाइम, और जिसको हम क्या कहते हैं, दैट इज नोन एज टर्नओवर नंबर। एंड दिस वैल्यू विल बी कांस्टेंट फॉर ऑल द डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बीटा अमाइलेज। यू प्लीज रिमेंबर दिस। अगर यहाँ पर मैं बीटा अमाइलेज का कॉन्सेंट्रेशन, ये डेटा बदल भी दूं बीटा अमाइलेज का, राइट, so for with that particular set of substrate concentration, right, this for this enzyme at different concentration the value of kcat is not going to change। ये याद रखना, kcat का वैल्यू सेम एंजाइम के लिए सेम कंडीशन में अलग अलग कॉन्सेंट्रेशन पे सेम रहेगा, इट इज नॉट गोइंग टू चेंज। हाँ, Vmax बदलेगा, लेकिन एंजाइम कॉन्सेंट्रेशन बदलने से kcat वैल्यू नहीं बदलेगा, एंजाइम कॉन्सेंट्रेशन बदलने से Vmax बदलेगा, राइट। सो फॉर दिस पर्टिकुलर एंजाइम एट अ गिवन सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन एंड अंडर गिवन ऐसे कंडीशंस the value of kcat is not going to change, और इसीलिए kcat is more reliable kinetic parameter than that of the Vmax। तो ये आपको समझ में आया? Have you understood this? Yes, Yes, sir. sir. ओके, थोड़ा आगे बढ़ते हैं। देखिए, एक दो क्वेश्चंस मैंने क्लासिफिकेशन से भी लिए हैं, क्योंकि जब एंजाइम क्लासिफिकेशन की बात आती है तो हमें जनरली हम थोड़े ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं। एंजाइम क्लासिफिकेशन में हम कहते हैं कि उसमें है क्या, 6 तो क्लास हैं, ऑक्सीडोरिडक्टेज, ट्रांसफरेज, हाइड्रोलेज, जो यहाँ पे ऑलरेडी स्लाइड पे दिखाए गए हैं। ऑक्सीडोरिडक्टेज, ट्रांसफरेज, हाइड्रोलेज, लाइज, आइसोमरेज, लाइगेज, उसमें करना क्या होता है, उसमें तो ये 6 क्लास याद रख लो, यू विल बी एबल टू क्रैक एनी क्वेश्चन फ्रॉम द एग्जाम। लेकिन अगर मैं आपको क्वेश्चंस कुछ इस तरीके से फ्रेम करके पूछूं, आपको कंफ्यूजन क्रिएट होगा या यू मे कम अप विद द रॉन्ग आंसर। फॉर एग्जांपल, those enzymes, listen the question carefully, that those enzymes which are responsible for intramolecular oxidation reduction are classified under, अगर आपको आता है तो आई विल बी हैप्पी टू नो द आंसर फ्रॉम यू। अगर आपको ये क्वेश्चन समझ पकड़ लेते हो आप कीवर्ड और सही क्लास को आइडेंटिफाई करते हो तो आई विल बी हैप्पी। द क्वेश्चन इज दैट दोज एंजाइम्स
which are responsible for intramolecular oxidation reduction are categorized into which class of these enzymes? ये छह में से किसमें है? Pseudoreductase. Pseudoreductase. ऑक्सीडोरिडक्टेज। आपको ये इसलिए लग रहा है ट्रांसफरेज, ओके, आपको ये इसलिए लग रहा है क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीडेशन रिडक्शन वर्ड आया, इसलिए आपको 2-3 स्टूडेंट ने ऑक्सीडोरिडक्टेज कहा, राइट? अच्छा, ऑक्सीडेशन रिडक्शन से पहले मैंने एक दूसरा वर्ड इस्तेमाल किया था, इंट्रामोलेक्यूलर। ये आपने वर्ड सुना था ठीक से, इंट्रामोलेक्यूलर। इंट्रामोलेक्यूलर मतलब क्या? इंट्रामोलेक्यूलर मतलब एक ही मॉलेक्यूल के दो अलग अलग पोजीशन पे ऑक्सीडेशन रिडक्शन हो रहा है। मतलब एक कार्बन जो है वो रिड्यूस हो रहा है और दूसरा कार्बन जो है वो ऑक्सीडाइज हो रहा है। हैव यू स्टडीड टॉटोमराइजेशन? Yes, sir. दिस Transferase. Yes, sir. Sir, transferases. See, let us come to the conclusion. Anyhow, you are having your own guesses, लेकिन let us come to the conclusion. देखिए, टॉटोमराइजेशन से क्या होता है? कीटो टू इनॉल और इनॉल टू कीटो फॉर्म बनता है, राइट? तो ये जो इंट्रामोलेक्यूलर ऑक्सीडेशन रिडक्शन करने वाले जो एंजाइम्स हैं, इंट्रामोलेक्यूलर ऑक्सीडोरिडक्टेज, कीटो इज वन काइंड ऑफ isoform and enol is second kind of isoform, right? Even in your nucleic acid also you have keto to enol form, right? जो आपकी बेस पेयरिंग प्रॉपर्टी को भी बदल देता है। तो जनरली जब मैं ये कहता हूँ that those enzymes which are involved in the intramolecular oxidation reduction, then they neither belong to oxidoreductase nor they belong to transferase, but they belong to this isomerase class, because they are responsible for tautomerization. Tautomerization is nothing but one kind of isomerization. कई टाइप के आइसोमराइजेशन है, L2D है, कीटो टू इनॉल है, एंटी टू सीन है, राइट? कई अलग अलग टाइप के आइसोमराइजेशन है, राइट? तो जस्ट बाय लुकिंग एट ऑक्सीडेशन रिडक्शन यू कैन नॉट जंप टू द कंक्लूजन दैट नो दिस एंजाइम बिलोंग्स टू ऑक्सीडोरिडक्टेज। नो, ऑक्सीडेशन रिडक्शन किसका हो रहा है? इज देयर एनी इलेक्ट्रॉन डोनर? Is there any electron acceptor in this particular reaction? Whether the electrons are transferred from one molecule to another molecule or it is being transferred within the same molecule, ये भी हमें देखना पड़ेगा, राइट? तो अभी जो मैंने क्वेश्चन पूछा उसका जो सही आंसर था वो है आइसोमरेज, इट इज नॉट ऑक्सीडोरिडक्टेज। समझ गए? Yes, sir. चलो दूसरा एक क्वेश्चन पूछता हूं। आई होप दैट अब ये एग्जाम्पल के बाद यू विल बी एबल टू आंसर दिस सेकंड क्वेश्चन करेक्टली, ओके? those enzymes which are responsible for intramolecular transfer of the functional groups, those enzymes which are responsible for the intramolecular transfer of the functional group are categorized into which one of these? Transferase. Sir, transferase. देखो, ये जितना आसान लगता है ना इतना ये स्टेटमेंट है नहीं। देखो, आपने वही गलती की जो आपने पहले क्वेश्चन में की। आइसोमरेज ही आएगा, आइसोमरेज ही आएगा, यू आर राइट। आप ठीक से क्वेश्चन को समझिए, देखिए लैंग्वेज को समझिए। क्लासिफिकेशन में से जब एमसीक्यू पूछे जाते हैं ना तो थोड़ी सी लैंग्वेज की जगलरी होती है उसमें, राइट? आपको लगेगा कि ये ट्रांसफरेज है, लेकिन अगर आप क्वेश्चन को ढंग से पढ़ो तो मैंने ट्रांसफर के आगे एक टर्मिनोलॉजी यूज की, इंट्रामोलेक्यूलर। इंट्रामोलेक्यूलर मतलब विद इन द मॉलिक्यूल। अगर फॉर एग्जांपल फॉस्फेट ग्रुप है या मिथाइल ग्रुप है, वो किसी भी मॉलिक्यूल के फॉर एग्जांपल 3 नंबर की पोजीशन से फर्स्ट नंबर की पोजीशन पे चला जाता है, राइट? तो विद इन द मॉलिक्यूल ही ये ट्रांसफर हो रहा है। और ऐसे जो रिएक्शंस हैं दैट कैटेगराइज्ड अंडर आइसोमरेज क्लास, जैसे फॉर एग्जांपल आपने ग्लाइकोलिटिक पाथवे पढ़ा होगा। ग्लाइकोलिटिक पाथवे में 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड टू 2 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड का एक रिएक्शन है, राइट? यस सर। जिसमें फॉस्फेट ग्रुप तीसरे नंबर की पोजीशन से दूसरे नंबर की पोजीशन पे शिफ्ट हो जाता है विद इन द सेम मॉलिक्यूल। तो ऐसे जो रिएक्शंस हैं दे आर कैटलाइज्ड बाय दोज आइसोमरेसेस व्हिच आर नोन एज म्यूटेज।
right? It is just the shifting of the chemical group from one position to another position on within the same molecule, right? अच्छा, तो मैं आपको ये कह रहा था कि यहाँ पे जो क्लासिफिकेशन से रिलेटेड जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उसके अंदर ऐसी जगलरी जनरली एग्जामिनर्स करते हैं जिससे स्टूडेंट कंफ्यूज हो करके गलत आंसर लिख करके आ जाता है, राइट? अच्छा, एक सिंपल मैं टीसीए साइकिल का रिएक्शन आपके साथ यहाँ पे शेयर करना चाहूंगा. Are you aware with the TCA cycle? All the intermediates, are you aware? Yes, sir. Yes, sir. उसका एक बहुत ही फेमस रिएक्शन है सिट्रेट टू आइसोसिट्रेट. टीसीए साइकिल में एक रिएक्शन है citric acid to isocitric acid, citrate to isocitrate, both are the isomers of each other, right? So this belong to which class? ये 6 में से कौन से क्लास में वो फॉल करता है? जो एंजाइम उसका जो है रिस्पॉन्सिबल वो है एकोनिटेज which converts citrate to isocitrate. So that particular enzyme belongs to which class? Any idea? Okay, let us discuss few questions. हाँ, yes, please go ahead. Go ahead. सर उसमें तो सिर्फ बॉन्ड का ही माइग्रेशन होता है, इतना पता है. लाइक बॉन्ड का माइग्रेशन होता है, हाँ, लेकिन अगर हम एंजाइम की मैकेनिज्म को देखें तो ये बॉन्ड का जो माइग्रेशन या जो भी आप बोल रहे हो वो इन 6 अलग अलग क्लासेस में से कौन से क्लास में आपको देखने को मिलता है? ओके, एक काम करते हैं, हम कुछ क्वेश्चंस को क्लासिफिकेशन से रिलेटेड जो 2-3 क्वेश्चंस थोड़े सॉल्व करने का हम प्रयास करते हैं सो दैट यू विल कम टू नो दैट हाउ टू आइडेंटिफाई द करेक्ट क्लास ऑफ द एंजाइम. देखिए, सबसे ज्यादा ट्रिकी जो कोई क्लास अगर है तो वो है आइसोमरेज एंड लायस. दूसरी एक खासियत मैं आपको बता दूं कि ये जितने भी 6 क्लासेस यहाँ पे मेंशन किए गए हैं उसमें 1, 2, 3, 4 एंड 6 ये सभी स्टीरियो स्पेसिफिक हैं. दे शो स्टीरियो स्पेसिफिसिटी. इट मींस दे विल बाइंड ओनली टू वन पर्टिकुलर आइसोमरिक फॉर्म ऑफ द सबस्ट्रेट. लेकिन एक क्लास इसमें से ऐसा है आइसोमरेज which does not show stereospecificity because it is involved in the interconversion of the two different isomers, L2D, D2L, anti to syn, syn to anti, boat to chair, chair to boat, keto to enol, enol to keto, right? तो एक आइसोमरेज ही ऐसा क्लास है जो स्टीरियोस्पेसिफिसिटी नहीं दिखाता. बाकी सभी क्लासेस एंजाइम्स के जो हैं दे शो स्टीरियोस्पेसिफिसिटी, राइट? तो ये भी एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक आइसोमरेज क्लास की है, राइट? सो लेट अस डिस्कस few couple of examples related to the classification. जैसे अभी हमने डिस्कस किया that an enzyme catalyzing the reaction glycerate 3-phosphate to glycerate 2-phosphate would have EC number with the first digit. कौन बताएगा? अभी हमने डिस्कस किया इसको. Maybe 5. मे बी नहीं, यू हैव टू बी श्योर. मे बी कहाँ होता है? मे बी तो ऑप्शन में नहीं है ना. यू हैव टू. सर 5 ही आएगा क्योंकि 5 नंबर पे आइसोमरेज है. यस, 5 ही आएगा क्योंकि आप देखिए अगर हम इस रिएक्शन को थोड़ा देख लें तो ये इस टाइप का रिएक्शन है. दिस इज 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड जिसमें आप देख सकते हो कि फॉस्फेट ग्रुप 3 नंबर की पोजीशन पे है और फॉस्फोग्लिसरेट म्यूटेज की प्रेजेंस में ये फॉस्फेट ग्रुप 3 नंबर की पोजीशन से आ जाता है दूसरे नंबर की पोजीशन पे. सो हियर दिस इज द वेरी गुड एग्जांपल ऑफ intramolecular transfer of the functional group. That is, within the same molecule this phosphate group is transferred from position number 3 to position number 2, and these kind of reactions are catalyzed by mutase kind of isomerase, right? So this comes under the category called isomerase. I hope that this is clear. अच्छा, ये तो आंसर इज ए, isomerase. द मॉडल क्वेश्चन यहाँ पे जो अभी हमने एक एग्जांपल डिस्कस किया था, सिट्रेट टू आइसोसिट्रेट
which is a TCA cycle enzyme, and this particular reaction is catalyzed by the enzyme called aconitase. So the question is that this particular reaction and the enzyme aconitase, it belongs to which class? Sir, Hydrolase, lyase B. lyase B. कैसे आपने इसको आइडेंटिफाई किया? How? Sir, water is added in the first sub reaction and later on it is removed. Because of that, हाँ, तो लायस का मैकेनिज्म क्या है? When the water is added added as a H2O or it is added as HOH? देखिए No. इसका थोड़ा हम रिएक्शन देख लेते हैं, तब आपको पता चलेगा. ये उसका रिएक्शन है. देखिए ये सिट्रेट का स्ट्रक्चर है. यू कैन सी दैट ऑन पोजीशन नंबर 2 and 3 position 2H is there and position COH is there. So in the first reaction, these H and OH functional groups are removed. Now the characteristic of the lyase is that when these functional groups are removed, there is an introduction of the double bond. So from the citrate, when this H and OH are removed from the citrate, it will form the intermediate called cis aconitate, and this cis aconitate is an unstable intermediate. So that's why again H2O is re-added. So when this H2O is added, the H and OH are not added on the same position, but they are added on the different positions. As you can see here कि पहले जहां पे H था वहां पे OH चला गया, और पहले जहां पे OH था वहां पे H चला गया. तो प्रोडक्ट आइसोसिट्रेट बना, लेकिन जिस मैकेनिज्म से बना वो मैकेनिज्म लायस का था, राइट? Because lyase enzymes are characterized by removal of the functional group and introduction of the double bond, and removal of the double bond and the introduction of the functional group. तो इस मैकेनिज्म के ऊपर लायसेस जो है वो काम करते हैं, और इसकी वजह से ये पर्टिकुलर रिएक्शन जो है वो काफी क्लासिक एग्जांपल है लायस का. और जनरली स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि एकोनिटेज उसको कभी कभी हाइड्रोलेज में भी वो लोग आइडेंटिफाई कर देते हैं, क्योंकि एकोनिटेज जैसे यूरिएज, अमाइलेज, प्रोटीएज, तो स्टूडेंट को लगता है कि हाइड्रोलेज के सभी एंजाइम्स में पीछे एज आता है, तो इसका मतलब कि ये हाइड्रोलेज हो सकता है. दूसरा, सिट्रेट टू आइसोसिट्रेट, इनको देख करके जनरली स्टूडेंट को लगता है कि सिट्रेट और आइसोसिट्रेट तो एक दूसरे के आइसोमर्स हैं, तो हो सकता है कि ये एंजाइम आइसोमरेज में आए. लेकिन करेक्ट आंसर लायस इसलिए है क्योंकि उनका जो मैकेनिज्म है वो इस तरीके का है दैट लायस इसका जो जनरल मैकेनिज्म है दैट रिमूवल ऑफ द फंक्शनल ग्रुप एंड इंट्रोडक्शन ऑफ द डबल बॉन्ड एंड एडिशन ऑफ द फंक्शनल ग्रुप एंड द रिमूवल ऑफ द डबल बॉन्ड, ये लायस का एक टिपिकल रिएक्शन मैकेनिज्म है, जो मैकेनिज्म एकोनिटेज एंजाइम भी फॉलो करता है, और उसकी वजह से ये पर्टिकुलर रिएक्शन जो है दैट कम्स अंडर लायसेस, राइट? तो ये कुछ क्वेश्चंस थे जो मुझे डिस्कस करने थे. तो यहाँ पे मेरा जो पोर्शन था एंजाइमोलॉजी का विथ रिस्पेक्ट टू द CSIR नेट एग्जामिनेशन, दैट इज आई थिंक ऑलमोस्ट कवर्ड. So now I am open for questions. Sir, Yes. There is one more class of enzymes, seventh class, known as translocases. So do Okay. they ask questions upon that? Generally, whatever the question papers which I have seen so far, right? In those question papers, the questions are from these 6 typical classes only. सी ट्रांसलोकेस जो आप बोल रहे हो ना, वो ट्रांसलोकेस में अभी भी थोड़े से मतलब इन्वेस्टिगेशंस बाकी हैं. मतलब अभी उसको एज अ ऑफिशियल क्लास जो एंजाइम कमीशन है ना, उसने अभी उसको मान्यता नहीं दी है. In 1972, International Union of Biochemistry, they have set up an enzyme commission, right? और ये एंजाइम कमीशन ने अभी इसको मान्यता नहीं दी है. तो ये जो अभी ट्रांसलोकेशन जो आप 7th क्लास की जो बात कर रहे हो, वो अभी
ट्रांसफरेज की कैटेगरी में ही है, मतलब हो सकता है कि आगे जा करके उसे अप्रूवल मिले और 7th क्लास में उसको कैटेगराइज किया जाए, लेकिन अभी तक एंजाइम कमीशन ने मुझे नहीं लगता कि उसको अप्रूव किया है। Okay, sir. Thank you. Any more questions? So over to you, madam. Okay, sir. Thank you. I'm sure, sir, students have a very detailed information now for enzymology, and the best part was that there were lots of different kinds of questions in the session, and I think that's what this workshop is meant about, that we can help you with those teething issues and troubleshooting which you normally face in attempting questions. Thank you, sir. Thank you very much for your time and your enriched session. And also, happy Teachers' Day. I forgot to mention that in the starting. So, wish that today all the teachers have a good time. Although it's falling on a Sunday, but and students, we wish that all of you have a successful CSIR NET exam. That's what I would say. And once sir shares all the details with us, we will share it to you in the classroom along with some practice questions. Okay. Thank you, sir, once again. And I Thank you, would like madam, to, and same to you. yeah, thank you, sir. I would like to end the session, and for next week, we'll send the schedule to you. Thank you, students. Thank you, everyone. I'm Thank closing you. it. Thank you. Yeah. Thank you. Thank you, sir. Thank Thank you, you, ma'am. ma'am. Very, very, very good returns of the day. Thank you, ma'am. Sugar,